हो हो. आल्या 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 मॅडम. हॅलो. आल्या मॅडम आल्या. हा, वारकर सरांना हॅलो. थोडा कॉल करून घ्या ना, प्राचार्यांना. नाही, सरांचा कॉल आला होता. हा? सरांपैकी खेराणी सर करतील. हो सर का? गडचिरोलीला चालले. हो 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 हो, बर बर. हो. हॅलो. हा हा. हॅलो. हॅलो मॅडम. हा सर. स्टार्टिंगला सरांचं काही घ्यायचं असेल तर सर येऊन आहे, बसून आहे. हॅलो. हा हा सर. सर ऑफिस मध्ये आहे, कनेक्टेड हा. आहे. ओके ओके. स्टार्टिंगला मग घेऊन घेऊ मॅडम. हा, नंतरचं ओके. जे सरांचं आहे ना, ते कदाचित हा. ट्रॅव्हलिंग मध्ये असेल तर प्रॉब्लेम येईल. त्यामुळे सरांनी सांगितलंय हो. मला, तर तेव्हा पाहू आपण नंतर. सध्या सर आहे ऑफिस मध्ये. ओके ओके. ओके मॅडम. नाही करत आहे बेटा, चालू आहे चालू आहे. हॅलो. हा हॅलो. हा, हॅलो. हा, गुड मॉर्निंग मॅम. गुड हा, मॉर्निंग मॅम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड खूप मॉर्निंग सारा मॅम. लाऊड स्पीकिंग होत आहे. सर मला होस्ट करा तुम्ही. माझं पीपीटी प्रेझेंटेशन येणार नाही तोपर्यंत. हो हो मला हो होस्ट करा तुम्ही, होस्ट करा. हो हो. हा, देशमुख सर. हा, देशमुख सर. हॅलो. हा, देशमुख सर. Good morning to all of you. Good morning from Dr. Prasad Singh, Bihar. ओके, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. हा हॅलो. हा मॅडम. हॅलो. मॅडम आवाज येतोय का सर? हो मॅडम. हो 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 सर. हो मॅडम. आणि येऊन राहिला मॅडम. पीपीटी येते का माझी? पीपीटी हो दिसते? हो 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 मॅडम, येत आहे. हा हा. ओके ओके. हा हो ते करते. अजिंक्य ते थोडस मला पुढे घ्यावं लागेल. नाही नाही, ठीक आहे. हे वाचता आलं पाहिजे मला थोडस. हे येईल ना बारीक. हा थोडस. एक मिनिट. बस बस बस. ठीक आहे. कारण ते बारीक आहेत अक्षर थोडं. ठीक आहे ठीक. ते जास्त जाऊन यासाठी आवाज येतो म्हणून. अरे डॉक्टर साहब, क्या बोलते हैं? वो आप बोले थे वैसा. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. 22 ला आहे ना? हो, नक्की.
घरी तिकडे ठेवलं. हा, ठीक. अभिनंदन, बसा ना. हा हा छान. चालते नाही ठीक आहे. ते भो वाजत होतं काल. हा साडे 11 पर्यंतच करायचं. आवाज चालू आहे ना माझा? व्हिडिओ बंद नको. सुरूच तर नाही केलं. इथे काय केलं आहे बंद? ठीक आहे ना, काही प्रॉब्लेम आहे आता. टिकटिकच करायचं. हो हा हॅलो वंदना सर. हा मॅडम. हा आवाज येत आहे माझा? हो 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 हो. हा ठीक आहे. ओके. हॅलो हा मॅडम. हॅलो, एक आवाज मिनिट येतोय मॅडम. ना सर नीट? हो 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 बिलकुल बिलकुल. आवाज आवाज ऐकायला येतो ना सर नीट? हो हो आणि नीट येत आहे. पीपीटी हायलाइट होते ना? हा हो हो हायलाइट होत आहे. ओके मॅडम. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. साबळे मॅडम. हॅलो. हा साबळे मॅडम. हॅलो. हा गुड मॉर्निंग मॅम. हाय. गुड मॉर्निंग मॅम. हॅलो. सर मॅडम जॉईन नाही आहे का साबळे मॅडम? हॅलो. अरे कोण आहे तिथे? साबळे मॅडम असतील. होम इकॉनॉमिक्स मध्ये जॉईन व्हा म्हणा. जावर. जॉईन आहे. हॅलो. हा वंजारी मॅडम. हॅलो. हॅलो बोला. हॅलो. हा साबळे मॅडम जॉईन नाही आहेत का? साबळे मॅडम आहे ना जॉईन? जॉईन आहेत ना? आवाज येत आहे का मॅडमचा तुम्हाला? नाही ना, आवाज नाही येऊन राहिला. हा आता बघा. हॅलो. हा आता येत आहे मॅडम. येत. वसाके सर. हा मॅडम. वसाके सर, माझा आवाज येतोय ना? हो 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 बिलकुल बिलकुल सर. ओके. क्लिअर येत आहे मॅडम. हो ठीक आहे. थँक्यू. ओके ओके मॅडम. नाही रे, होम इकॉनॉमिक्स बंद नाहीये, चालूच आहे. अंदरून थोडस सांगा चालू. हॅलो साबळे मॅडम, चालू करायचं. हॅलो साबळे मॅडम. हॅलो, आवाज येतोय सर? हो आवाज लटकत येऊन राहिला तुमचा. चालू करा ना. चालू हो करायचं. चालू कर. हो. हो गए दार. स्पीकर बंद करा तुमचा. सभी मान्यवरों को सुप्रभात. आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल राजुरा द्वारा संचालित गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली संलग्न श्री शिवाजी कला वाणिज्य तथा विज्ञान महाविद्यालय राजुरा मैं डॉक्टर सारिका मानिकराव साबळे, ग्रंथपाल
आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप इस एक दिवसीय आभासी चर्चा सत्र में स्वागत करती हूँ। आज के चर्चा सत्र के अध्यक्ष रूप में हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर राजेश खैरानी, अतिथि के रूप में हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SM वारकड़ सर, आज के विषय के लिए मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित डॉक्टर रजनी देशमुख मैडम, आज के प्रमुख वक्ता के तौर पर उपस्थित डॉक्टर कावेरी दाभेकर मैम, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मल्लेश रेड्डी, इस एक दिवसीय चर्चा सत्र के आयोजक मेजर डॉक्टर प्रमोद वसाके सर, इस चर्चा सत्र में आभासी रूप से जुड़े हुए सभी प्राध्यापक, विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का विषय यूज ऑफ वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन, अ सस्टेनेबल अप्रोच। पानी का मूल आवश्यक है और बुनियादी है। एक है जैसे कि जीवन मंडल पर जीवन रूप जीवित चीजें, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के लिए, समुदायों के लिए, समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए। यद्यपि कुल पृथ्वी का जल 71% है और निरंतर जल का विज्ञान चक्र के गुजरते हैं, जैसे वनस्पति वाष्पोत्सर्जन, बाष्पीकरण, वर्षा, अपवाह, घुसपैठ और अन्य प्राकृतिक प्रक्रिया। नतीजन में वर्षा कोई भी स्थानों पे समान नहीं होती और इसलिए पानी की कमी अंतिम है। नतीजा, पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से भरा होने के बावजूद 97% महासागरों में है और केवल मीठे पानी का स्रोत 3% है। हाल ही में वर्षा से तेजी से बढ़ रही जनसंख्या का कारण जल स्तर गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। वृद्धि, औद्योगिक और शहरी विकास, अधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अंटार्कटिक और आर्कटिक के ग्लेशियर में सिकुड़न, प्राकृतिक आपदाएं, वर्षा का स्थानांतरण और कम बर्फ का पैक और पानी की सही तरीके से और धीमी गति से उपयोग करने में लोगों की लापरवाही, प्राकृतिक जल की पुनःपूर्ति, इसके अलावा कठोर आर्थिक विस्तार, ऊर्जा की मांग और फिर से भरे हुए पानी की सिकुड़न प्रमुख चिंता का विषय है। इस विषय पर भूमिका स्वरूप टिप्पणी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय भूगोल शास्त्र विभाग प्रमुख मेजर डॉक्टर प्रमोद वसाके सर। डॉक्टर प्रमोद वसाके सर। हाँ, थैंक यू मैडम। मैं डॉक्टर प्रमोद वसाके, सहायक प्राध्यापक भू विभाग प्रमुख श्री शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय राजुरा, जिला चंद्रपुर, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वर्गीय प्रभाकर राव मामूलकर साहब के पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन करते आज दिनांक 12/4/2022 के वनडे नेशनल ई सेमिनार से गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली से संलग्नित श्री शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय राजुरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल राजुरा के सम्माननीय सभी संचालक मंडल और सम्माननीय पदाधिकारीगण, हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल जो अतिथि के रूप में उपस्थित है, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर SM वारकड़ सर, इस कार्यक्रम के की नोट स्पीकर डॉक्टर रजनी देशमुख मैडम, एक्स HOD डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, भारतीय महाविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र, और दूसरे तौर पर रिसोर्स पर्सन करके लाभे है डॉक्टर कावेरी दाभड़कर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट बिस्ला गर्ल्स PG कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। और अध्यक्ष के रूप में हमारे यहाँ के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर खेरानी सर और IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मल्लेश रेड्डी सर, एक्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय शेंडे सर, डॉक्टर सारिका साबड़े मैडम, डॉक्टर वंजारी मैडम, डॉक्टर भोंगाड़े मैडम, डॉक्टर मनूरे सर, भूगोल विभाग के मेरे सहकारी मित्र प्राध्यापक मुन सर आणि ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स, इस सेमिनार्स में जुड़े सभी महाविद्यालय प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनो, इन सभी को आज के वनडे नेशनल ई सेमिनार में भूगोल विभाग की तरफ से मैं तहे दिल के
हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस प्रास्ताविक की शुरुआत करते हुए ईश्वर में हमें 5 महत्वपूर्ण तत्व दिए हुए, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, आकाश। सभी कल्पना की है कि इन 5 तत्वों में एक तत्व ना रहे तो क्या होगा। जी हाँ, हर एक तत्व का एक अलग महत्व है, जिसमें जल का एक बहुत ही अनमोल महत्व है। आपने वो कहावत ही सुनी होगी, जल ही जीवन है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी है, जिसका 96.5% नमकीन समुद्र पानी है और मात्र में 3.5% ही पानी पीने लायक है। इससे यह साफ पता चलता है कि आने वाले वक्त में मनुष्य के लिए जल का कितना बड़ा अभाव होने वाला है। इसलिए आज ही जल संरक्षण का कार्य करना होगा। तो व्हाई टू कंजर्वेशन वाटर, मनुष्य जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, यह पानी बचाने के सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों को पानी बहुत ही किल्लत होती है, इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण है और बढ़ती जनसंख्या। परंतु जिस प्रकार आज सरकार ने पानी का बिल लेना शुरू कर दिया है और बाजारों में पीने का पानी तेजी से बिक रहा है, यह साफ पता चलता है कि पेयजल में तेजी से कमी आ रही है। विज्ञान की मदद से आज समुद्र के खारे जल को पानी लायक बनाया जा रहा है, पीने लायक बना जा रहा है। क्योंकि गुजरात के आदि नगरों और प्रत्येक घरों में पीने के जल के साथ साथ घरेलू कार्यों के लिए खारे पानी का प्रयोग करके शुद्ध जल संरक्षण किया जा रहा है। इसे पता चलता है कि गंगा तथा यमुना जैसे बड़ी नदी की सफाई करना बहुत जरूरी है। बड़ी नदियों के जल का शोधन करके पेयजल के रूप में प्रयोग किया जा सके और प्रशासन को लगातार सक्रिय रहना जरूरी है। पीने का पानी कम होने के कारण लोग अशुद्ध पानी का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य को बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े किसान अधिक लोभ के कारण ज्यादा से ज्यादा बोरवेल खुदा रहे हैं, जिसमें वे भूजल ज्यादा भाग गर्मियों के महीने में कृषि के लिए उपयोग कर रहा है। इसका सीधा असर पृथ्वी के जल पर स्तर पर पड़ता है और कुछ वर्षों की अच्छी खेती बाद उनकी धरती बन जाती है। मनुष्य को पानी की आवश्यकता हर क्षेत्र में, जैसे पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, कपड़े धोने, फसल उगाने आदि के कार्य में लगी जाती है। क्योंकि जल की कमी से प्रकृति की संतुलन बुरी तरह से बिगड़ते जा रहा है, जो पृथ्वी के हर जीव संकट को और लेते जा रहा है। क्योंकि जल संकट के कारण तालाब, सरोवर एवं कुएं सूख रहे हैं, नदियों का जलस्तर घट रहा है और जमीन का जलस्तर भी लगातार कम होते जा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं पौधों या अस्तित्व मिट रहे हैं। खेतों की उपज घट गई है और वन भूमि सूख रही है तथा धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस तरह से जल संकट का दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। अंत में यही कहूंगा मैं, जल ही तो जीवन है और जीवन ही पर्यावरण है। पर्यावरण से धरती है और धरती से हम सब है। यही पे मैं अपने प्रास्ताविक को पूर्ण विराम देता हूं और रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। जल का महत्व और उसकी आवश्यकता का महत्व विशद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य उनकी व्यस्तता के कारण आज के अध्यक्ष थे, पर उनकी व्यस्तता के कारण आज वो प्रमुख अतिथि के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना मनोगत इस विषय पर व्यक्त करें। डॉक्टर SM बारकट सर। हॅलो. हाँ सर. हा ऐकायला येतं ना माझं कसं? हाँ सर. ओके सर. आवाज आज श्री शिवाजी कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय के ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की ओर से बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक के ऊपर जो एक वेबिनार आयोजित किया गया है। इस वेबिनार को एक वक्ता करके जो मार्गदर्शन करने वाले हैं मैडम
और हमारे डिपार्टमेंट के प्राध्यापक वसाके सर जिन्होंने ये आयोजित किया है। इस प्रोग्राम को जो जो ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं ये सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारे इस सेमिनार के आज के अध्यक्ष हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राजेश खेरानी, डॉक्टर वनिता वंजारी मैडम, साबळे मैडम, IPSC के डॉक्टर मल्लेश रेड्डी, डॉक्टर संजय शेंडे और महाविद्यालय के सभी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के सभी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। पानी का कितना महत्व है और पानी का उपयोग कैसा करना चाहिए, कंजर्वेशन कैसा करना चाहिए, और पानी यूज तो होना चाहिए लेकिन कितना यूज होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स है, कितना जुडिशियसली हम यूज करना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट के बारे में जो डिटेल में चर्चा करने के लिए आज का जो आयोजन किया गया है, इसलिए सभी लोगों का मैं महाविद्यालय का प्राचार्य करके आप सभी का तहे दिल से इस मौके पर कि जो चीज हमारे पास बड़े प्रमाण पे अवेलेबल होती है उसका मूल्य कम होता है, और जो चीज मिलती नहीं है तो उसका मूल्य बहुत बढ़ता है। जो डिस्ट्रिक्ट्स आज महाराष्ट्र में हम देखते हैं, बीड है, लातूर है, उस्मानाबाद है, वी सी द स्कार्सिटी ऑफ वाटर देयर। एक महीने में एक दिन पानी महानगर पालिका देती है। पानी के लिए इंडिया में पहली बार ट्रेन चली है, ट्रेन के टैंकर से पानी लातूर में आया है, तो उन लोगों को पानी का महत्व समझ में आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जैसा कंसेप्ट है, सस्टेनेबल एक कंसेप्ट जो है पानी के लिए भी यूज होना चाहिए। आज हमारे पास में स्पेशली पूर्व विदर्भ में पानी बहुत अवेलेबल है, इसीलिए पानी के बारे में हम उतना सीरियसली सोचते नहीं है, लेकिन जहां पानी नहीं है वहां पानी का महत्व कितना बड़ा है, तो वहां जाने के बाद में, वहां के लोगों का स्ट्रगल देखने के बाद में, वहां के लोगों का जो धड़पड़ है पानी के बारे में, एक एक बूंद के लिए कितना तरसते हैं, जब हम देखते हैं तब पानी का महत्व पता लगता है। आज अपने तरफ वर्धा रिवर है, वैनगंगा है, वैनगंगा रिवर है, बड़े प्रमाण पे पानी वगैरह हमारे तरफ अवेलेबल है, लेकिन बार बार मैं कहता हूँ, हम हमारे स्टूडेंट्स को भी कहते हैं कि पानी का यूज सही तरीके से करो। पानी आज हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। एक आधा दिन आप थोड़ा एक 5-10 मिनट के लिए सोचो कि नल नहीं आया है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम वाटर लिफ्ट करते हैं मोटार से, मोटार खराब हुई है, तो पानी के बिना एक दिन हम कैसा रहेंगे, ये सोचेंगे तो भी पता लगेगा कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। एक दिन क्या 2 घंटे भी ये समर डेज में निकालना मुश्किल है। तो सभी प्राध्यापक गण हैं, सभी विद्यार्थी गण हैं, पानी का जो यूज है ये महाविद्यालय में हो, महाविद्यालय के बाहर में हो, समाज में हो, अपने गांव में हो, सभी तरफ इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। और डेफिनेटली जितना भी वाटर अवेलेबल है, आपको अभी प्रस्तावना में हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर कैप्टन वसाके ने बताया आपको कि 1% भी ड्रिंकेबल वाटर बचा नहीं है। जो वाटर समुद्र के अंदर है वो पीने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन जो पीने के लिए योग्य है, ड्रिंकिंग वाटर 1% बचा है। यदि हम ये हॅलो सर, म्यूट झालेत तुम्ही. हॅलो पारकर सर, हॅलो सर, सर तुम्ही म्यूट झाले. सर म्यूट हो गया. नहीं सर, अभी हो चालू. त्यांना कॉल आला त्याच्यामुळे झालं. हेलो, अभी आ रहा. हाँ सर. पानी का जो यूज इसलिए भी हो कि हमारे पर्सनल यूज के लिए हो, हमारे फार्मिंग के लिए हो, जो भी है, पानी ये सीपेज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर में जाना चाहिए, ताकि उसका रिसाइकल हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पानी यूज करने के लिए मिलेगा. इसलिए मैं इस टाइम पे यही आशा करता हूँ
कि सभी लोग पानी का यूज अच्छा करेंगे और सभी लोग इसकी पब्लिसिटी करेंगे, सभी तरफ अवेयरनेस बढ़ाएंगे। अपने पड़ोसी हो, हमारा एरिया हो, हमारे वार्ड हो, हमारा गांव हो, कहीं पे भी हम जाएंगे पानी के बारे में, कहीं पे भी वेस्टेज हो रहा होगा तो 4 लोगों को बुला के हम इसमें कंजर्वेशन का काम करेंगे, ये आशा करता हूँ। और आपने जो व्यस्त आज शेड्यूल है तो भी आपने बुलाया, थोड़ा सा टाइम लिया। सारिका मैडम है, कैप्टन आपने वसाके साहब है, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जल पीकर जीते सब प्राणी, जल ही जीवन है, सुखद स्पर्श सुस्वाद मधुर ध्वनि दिव्य सुदर्शन है। जल पीकर जीते सब प्राणी, जल ही जीवन है, पानी बिन सब सून जगत में, यह अनुपम धन है, यह अनुपम धन है। पानी का महत्व और जतन कितना आवश्यक है, इस विषय पर हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित डॉक्टर रजनी देशमुख मैडम का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय की गणित विभाग प्रमुख डॉक्टर चेतना भोंगाड़े मैडम की वो मैडम का परिचय करके। डॉक्टर चेतना भोंगाड़े मैडम। हॅलो, हॅलो मॅडम, तुम्ही म्यूट आहात. हा केलंय मॅडम, केलंय. आहे मी ऑनलाईन आहे मॅडम. नाही तुम्ही नाही, आमच्या भोंगाडे मॅडम म्यूट आहेत. हॅलो भोंगाडे मॅडम. व्हेरी मॅडम. हा व्हिडिओ बंद कर. सुरू केला कसा हात लावला. Sorry for interruption. Good morning all. It's my wish to introduce respected Dr. Rachel from Connect. Okay. I welcome you, madam. Dr. Deshmukh madam has 35 years of teaching experience. Her area of research is geomorphology, agriculture, biogeography, and population geography. Under her supervision, 21 students awarded PhD degree. So many research papers to her credit published in reputed journals. She has presented a paper in International Journal at Glasgow, United Kingdom in 2004, also at Dubai in 2017. She has honored by Best Geographer Award in 2016, Mithila University, Bodh Gaya, Bihar. Also honored by the DGS Society. Presently, she has honored by Jeevan Gaurav Puraskar on 16 February 2022 by the Institute of Geography, Pune, for her special contribution in geography. She is the chief editor member of Government of Maharashtra Pathya Pustak Mandal, Bar Bharati. She is the main author of the book Bhurup Shastra and Havaman Shastra. Also, she has published Textbook of Geography for the 6th standard to
12th standard for the year of 2014 to 2020. She is the life member of MBSP Pune, DGS Pune, Kolhapur Geography Society, Brahmavartha Geography Society of India. Over to you, Dr. Rajni Deshmukh, Madam. Dr. Rajni Deshmukh, Madam. Hello. Over to Dr. Deshmukh, Madam. Hello. हॅलो Hello. मॅडम. हॅलो मॅडम आवाज येतोय हो हो हा, येतोय हा, आवाज. ऐकायला येत आहे हो हो. हा नमस्ते गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू Today's webinar organized by Sri Shivaji College Arts, Commerce and Science, Rajura, Gadchiroli. This webinar, the host of the Department of Geography and convener of this the webinar is Dr. Pramod M. Vasake. And today's webinar chairperson, Mr. Respected Principal, Dr. S.M. Varkad. I am again, good morning all of you. All the person, they join the online webinar, the invited delegates, professors, lecturers, students, and interested in geography. All are, I am given the welcome my speech. Okay. Today's webinar subject, the water use and water conservation, sustainable approaches. This subject given me my colleague the Vasake sir after in the March month, and this they give me the date of 22 March. The webinar is the firstly organized 22 March, but some internal problem they told me this program is postponed. I am very glad, Mr. Vasake sir, 22 March, you are given the date and your theme or the webinar subject is correlated because the 22 March is the World Water Day. The World Water Day is the celebrating whole world into the 22 March, and your webinar is also you conduct 22 March, but some problems, this is the postpone, and given the subject is very nice and very touching subject for all of the person in the whole world, because the water is very problems in the all peoples. They all if want all the living person, human being, plants, animals, these are very important the life of the water. Okay. First, I told you this the World Water Days in 2022. The world celebrating the water days. The theme of this year is groundwater, making the invisible to visible. The theme of this year, the groundwater making the इनविजिबल टू विजिबल, जो दिख नहीं रहा है पानी, वो जो स्रोत है पानी का जो अंडरग्राउंड में होता है उसको विजुअलाइज करना है, और ये ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो फ्रेश वाटर जो है उसका कंजर्वेशन करना है, उसका यूज भी प्रॉपरली करना है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस वी आर कंजर्वेटिंग टू द वाटर. ओके, क्योंकि भूजल पृथ्वी पर मीठे पानी का जो स्रोत है, अभी मैडम ने कहा कि वेरी फ्यू % अवेलेबल ऑन द अर्थ, क्योंकि लॉट ऑफ वाटर इन द saline water in the sea and ocean, there is 71% and others is the land, but the sweet water is a very few % available on the ground. Therefore, we want to conserve, and our responsibility on your all the persons. Okay, my PPT, I am starting this, the next. Okay, sorry.
Okay. Introduction. In this the introduction I am giving the all primary or basic concept of the water, because water is one of the most precious gift of nature without which one life could survive on the earth. Water is one of the most important substance that are needed for all living life, plants, animal, human being, and the environment needs water to survive and the function, because water is precious resource. It is the organic, transparent, tasteless, odorless, and a nearly colorless chemical substance. Therefore, it is the liquid form H2O. This is the universal solvent, is the one of the major resource on this planet. It is the impossible for life to function without water. That time is the very we have going to the back our age. That time the Thales Malthus, he stated that the our is the main constitute of Earth hydrosphere in the age of Greek civilization. They believed to have philosophies that the best of everything is water down the country. He stated that the 640 to 546 BC, and next the philosopher stated, 1 minute, the Leonardo da Vinci. He stated that time the water as the driver of nature. All means related, all organism of the nature is related to the water, because it is the driver. It is very difficult to convey of any programming of human development of without water. It is very easily available and free gift of nature. The water demand will significantly and increase because of growing world population, accelerating industrialization, expanding use of agriculture, and increasing economic well-being of the people. Globally, there may potentially be enough the water to meet the forthcoming human need, for the unfortunately much of water resources is not available at the right place, right time, and the right quality to serve the human's need. Thus, in one way or the others, all societies, rich and poor, are generally affected. Mr. Leonardo da Vinci, he explained the water is available everywhere, every time, but today is the scarce. Hello. Hello, madam. Deshmukh madam. Hello. Deshmukh madam. Hello. मॅडम म्यूट आहेत मॅडम. हा मॅडम ना थोडं अनम्यूट करा सर. आणि मॅडमची स्क्रीन पण शेअर नाही होत आहे सर. नाही, माझ्याकडून इकडून काही प्रॉब्लेम आहे मॅडम, त्यांच्याकडूनच आहे. हॅलो. माझ्याकडून काही प्रॉब्लेम, त्यांच्याकडून पीपीटी शेअर होते. पीपीटी नाही मॅडम. नाही म्हणजे सुरुवातीपासून झाली नाही का शेअर? हॅलो मॅडम, मगाशी विचारलं तर मॅडम तेव्हा झाली होती ना? तेव्हा झाली होती. आता बंद पडली का? ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. हा देशमुख मॅडम, पहिल्यांदा सुरुवातीला होती, नंतर आम्ही बंद केली कार्यक्रम सुरू असताना. अरे यार. हा, त्याच्यामुळे तुम्हाला पुन्हा शेअरिंग करावं लागेल. रिशेअरिंग करते. ओके सर, नो प्रॉब्लेम. हा हा. ओके मॅडम. सर आता येते का? हा येते. आता येते. ओके, झाले मॅडम. मॅडम त्याला लार्ज स्वरूपात करा.
पीपीटी शो करा. हॅलो. हा पीपीटी शो मध्ये घ्या. हा म्हणजे लार्ज करा, मोठी करा. हा येत आहे ना, येत आहे हो ना. येते दिसते. हो, ओके येते. क्लिअर आहे, क्लिअर. पीपीटी शो करा मॅडम, पीपीटी शो मध्ये जा. हा साईज छोटी झाली ती, त्याला मोठी करा, स्क्रीन शेअर करा त्याला. Enlarge it, please. It's not visible. Please enlarge it. माझ्याकडे लार्जच केलं असं, तुमच्याकडे बघा ना. हा नाही मॅडम, काय करा, पीपीटी शेअरचं माझ्याकडे- बटन आहे ना खाली, त्या ठिकाणी क्लिक करा, म्हणजे हा, स्क्रीन हा. मोठी होईल. सर लार्ज केली आहे ना मी. नाही मॅडम. यू आर स्क्रीन शेअरिंग केलंय ना सर. हो, केलंय केलंय ते, sharing. परंतु न्यू शेअरिंग करू का? 1 मिनिट. मला मग माझ्याच्यात सर मोठीच केलेली आहे मी, मोठीच आहे माझ्याच्यात. अन्वी, ए अन्वी, अगं ती मोठी करून पाहिजे ना इकडे. मोठी करा, दिसत नाही. असं नसते. 1 मिनिट. नाही होत आहे ना मोठी. शेअर करायचे म्हणजे पुन्हा शेअर मध्ये चल, शेअर मध्ये कर, शेअर मध्ये. हा हा शेअर. मॅडम, स्लाइड शोचं बटन आहे ना खाली, त्याला क्लिक करा. हा हो हो, हा केलाय. थांबा. शेअर काढ ना. हा स्क्रीन शेअर. हा आता तिथेच मोठं करून घे पहिल्यांदा, ते तसंच येते. डबल क्लिक. ते होत नाहीये सर. मॅडम डबल क्लिक साईडला बटन आहे होतंय का बघा, मॅडम? व्हॅल्यू मॅडम खालच्या साईडला डबल 3 बटन आहेत. खालच्या. हा कॉर्नरला आहे बघा. तुझ्या साईडला कोपरा खाली एकदम. 70%. हा कर मोठं. हा त्याच्या बाजूचं. हा आता डाव्या येते. साईडला हा आता झाली ना सर. नाही, डाव्या साईडचं बटन मॅडम, डाव्या साईडच्या बटनला क्लिक करा. डाव्या साईड आणखीन या, ते 3 बटन ना. हा 3 बटन ना, त्याचा 1 नंबरचं बटन दाबा. त्या बाजूचं तर मोठं केलंय मी आता ते. हा त्याच्या 2. हा राईट 3 दाबा. आलं का? ओके. हा ठीक. ओके. पण आता ते मला दिसणार नाही ना. It's okay now. It's visible. Please अरे continue. चल ना मागे. हा मागे चल. अरे मागे जायचंय बाबा, पुढे चालली. मॅडम जी स्क्रीन घ्यायची आहे त्याच्यावर क्लिक करा मॅडम. मॅडम ते पुढे सरकलंय भरपूर. ते आता मोठं केल्यामुळे सगळे बटन्स गेलेत त्याचे. मला काय त्याच्यातलं फारसं समजत नाही ना. आता ते भरपूर मागे गेलंय. हा इंट्रोडक्शन नंतर हे 4 झाल्या होत्या स्लाइड माझ्या ऍक्च्युअली. ठीक आहे, मी वॉटर सायकल घेते. ठीक आहे, इथून बोलते. इन अ जनरल, the main source of water is the water cycle or the hydrological cycle, because the rain give the sweet water. Therefore, the sources of is given of the cycle. Through the hydrological cycle, water circulate from the atmosphere to the earth. Drive by some sun energy, water move the endless from the ocean to the atmosphere to the continuous, but the precipitation that falls on the ocean does not contribute of the water resource. In this cycle, many processes involved. The most important are evaporation, condensation, precipitation, and runoff. About 85% of water vapor in the air came from the water bodies and evaporate from the ocean, and others 50% came from our over land. This includes the water vapor produced by the plant, lake, streams, ponds, and the soil moistures, etc. A water cycle is critical not only to weather but to life on the earth. Rain is necessary for the survival of humans and plants.
Consideration is necessary for the clouds formation. Evaporation is necessary to cooling and keeping the good versions. They show the hydrological cycle concept. This is all these things are the condensation, evaporation, condensation, precipitation, transpirations, and this is the groundwater flow. This is the surface runoff. This is the water bodies, and land is the plants is also given the moisturizer by the air. This is the hydrological cycle. After water is everywhere, which is the fortunate for all the humanities, as water is essential for life. But today, water is not always available in the needed quality and quantity for all people everywhere. People have learned to get and use the waterfall of their need from the drinking, bathing, cleaning, irrigation, producing electricity, industrial use, recreation, etc. Water can use for the direct and indirect purpose. Direct purpose include the drinking, bathing, cooking, and the indirect purpose are used of the water in processing steel wood to make the proper paper and the producing steel for the automobiles. The bulk of the water used in for the agriculture, industry, and electricity. Each person use about 80 to 100 gallons of water per day. The surprise that the large use of household water is to the toilet, and after that the take shower and bath. It is the very so problems in our country or on our world. Next, water for domestic use. Domestic use water for all usual domestic purpose, including consumption of bathing and food preparation. WHO means the World Health Organization. They call this is the maximum consumption of the water is bathing and food preparation. Near about 50% of water is consumed for domestic purpose. It is used for a household purpose. Water for agriculture use. Agriculture is the large consumer of water. About the 70% of water used for irrigation. Water is necessary for gardening, farming, and fishing. They all use of the agricultural use of water. For the main is the thing is the irrigation. Next is the water is industrial use. Industrial water use for washing, cooling, processing, transporting, dilating, and or the fabricating of the product. The maximum amount of water is used in the production, chemicals, paper, and wood industries. They want to the lot of water, means the maximum amount of water used and in the industries. Next, and other use of water. It is used as transportation, hydroelectric powers, making the electricity, tourism and recreation. In this recreation, swimming, surfing, boating, and recreating, fishing. This is the work. This is all types of the work they want a lot of water. They need for the lot of water. About the 80% of the rural drinking water supply and 33% of urban area supply is from the groundwater. 50% of irrigation also came from groundwater. Means the 33% of urban water supply is for the groundwater. And 50% of irrigation is also came from the groundwater. As per the norms of the National Drinking Water Mission, the present per capita need in rural areas, the 40 LPCD for the humans and additional of 30 LPCD for cattle. 40% is the human and 30% they want to the cattle. The norms of urban population varying from 130 to 150 LPCD. However, consumption in Delhi is
240 LPCD, which is the highest in the consume and the higher than that many cities in the West world. LPCD means liter per capita per day, means the per person per day. LPCD means the liter per capita person per day they want to the water. Means the need of the water. The standard norms for the domestic water use in India is 135 liters per capita per day, prescribed by the Central Public Health and Environmental Engineering Organization, CPHEEO, the Manual of Water Supply and the treatments. Next. And in the responsibility and the techniques of the efficiently utilize of water, means the water conservation refer to the preservation, control, developing of water resources and prevention of pollution. After the different use of water, the man and human being and others kinds of living or being, they want to water, but this water is availability is very shortest, because this is the in our today's days in the whole world the water crisis. Therefore, we want to conserve this the sweet water they want to use and they want to need in every day per day in every person in a life. It keeps water pure and clean and protecting the environment. It has become mandatory that we must value every drop of water and avoid the wastage at home, school, factories, and industries. Therefore, its needs and the importance of water conserve, because water conservation is important, ensure that the future generation have access to saving a fresh and clean water. Recycle, reuse and reuse, recycle and reuse with help the water conservation, adopting the policy and reuse, conserving the water. Next. Over the past 5 years, a rapid growth in population, modernization, growing the industrialization and expanding the agriculture has pushed up to the demand of water in the urban as well as rural areas. They want to the irrigation, expanding the irrigation. Therefore, they want to the lot of water or the demand of the water in his irrigation, agriculture irrigation. Human demands are increasing day by day, but the natural resources are in a limited quantity. Therefore, need and the importance of water conservation. It is often a misconception that the water conservation is the job of government department and environmental analysis, which is not true. This is not a job. This is the responsibility, all the persons. Hello. Hello. Water conserving is important because keep of water pure and clean. The next slide not open. What is the problem? What is the problem? 1 minute, sir. Okay, ma'am. This is not conservation water methods are there. Okay. Important method of water conservation. This is the method we are given. The rainwater harvesting, water metering, grey water cycling, pressure reducing valve, water efficient bathroom accessories, and water literacy is the different point I am taking in this. First is the rainwater harvesting. It is very effective method of rainwater harvesting, natural water replacing and the groundwater level. Because in today's we are facing the global warming
climate change, increasing populations, construction activities, industries, etc. All of these are the likely to the water shortage that we already face today. Deal with the problems कार्यक्रम of चालू आहे आणि तुम्ही क्लास घेता का म्हणता बैताळ कुठलं तर जॉईन होत नाही काही नाही. municipality all over the India have mandated rainwater harvesting. RWH is the very important method to rainwater harvesting. It is a seasonal and passive method of the conserve the water. In India, Chennai lead in the number of successfully implementation of this project, rainwater harvesting project in Chennai, implementation of this project. In Delhi, the Panchayat Park colony, about 1,000 of residents collect the rainwater, about 170 million liter water harvest. This is the important thing. Man is aware, they want to the water, therefore they want to the limited water in our planet, in our countries also. They want to the rainwater harvesting is the first method. Next is the metering of the tap. Another effective way is the cutting down the water wastage is to install the water meter and measure the amount of water that is being used in the residential and commercial building. इन द हम देखते हैं बड़े शहरों में तो वाटर मीटरिंग होता है, घरों घरों में होता है, बट वी आर गोइंग टू द विलेज साइड, देयर वी हैव सीन द ऑल गिवन द टैप and this tap already daily open, they cannot be turned out, the water waste by that is the, and no given any bill. Therefore the government want to punish the wastewater, they cannot be punished to the give the bill. जितना पानी वेस्ट करेंगे उसका बिल उनको आएगा. Therefore they cannot give free tap. कौन सा भी फ्री टैप गवर्नमेंट ने देना नहीं चाहिए, उसमें मीटर बैठाना चाहिए. जितना हम वाटर का यूज करेंगे उतना बिल पेमेंट होगा. फिर इन जनरली हाउस में हम देखते हैं, अरे पानी का यूज मत करो और बिल आता है, जरा ध्यान से पानी. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द वाटर. इन घरों घरों में है, लेकिन क्या है, ऐसा बोलते हैं जो समझता है लेकिन करते नहीं है. दिस इज द थिंग. नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग. The grey water recycling is the method of saving the water. Use the wastewater from kitchen, washing machine and shower, which is then recycled for use in toilet and gardening plants. देखो जब किचन का जो दाल चावल का पानी होता है, different types of fruits and vegetable, we are wash it. जो पानी होता है we are collect it, अपन ने वो कलेक्ट करना चाहिए और अपने घर में जो गमले है, जो गार्डन है जो हमने रखा है, उसमें हम उसका रीयूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी आर यूजिंग द वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर एंड द शावर. आफ्टर बाथिंग दिस वाटर इज आल्सो कलेक्ट एंड रिसाइकल यूज इन द टॉयलेट. टॉयलेट के लिए बहुत सारा पानी लगता है, जो फ्लश टॉयलेट होते हैं, अभी तो सभी में वही टॉयलेट का यूज होता है. दिस थिंग इज डिमांड अ लॉट ऑफ वाटर. देयरफॉर दिस वाटर इज अ ग्रे वाटर रिसाइकलिंग करके हम वो वाटर को यूज करते हैं. यहाँ मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ सिटीज ऐसी है. फॉर एग्जाम्पल इन आवर महाराष्ट्र, शेगांव, श्री गजानन महाराज की वहां पे बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत बड़ा वहां पे टेम्पल है. लेकिन आपको सुनने में थोड़ा आश्चर्य लगेगा, ओवरऑल शेगांव गांव में पानी नहीं है. वहां पानी इन समर में बहुत स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वहां घरों घरों में नल बंद हो जाते हैं, कुएं का पानी कम हो जाता है. लेकिन अमेजिंग थिंग तो ये है कि गजानन महाराज का जो मंदिर है, वहां जो कुएं, उनको लॉट ऑफ वाटर इन समर सीजन इज आल्सो. इज द अमेजिंग. मैं कोई श्रद्धा अंधश्रद्धा का कोई बात यहाँ नहीं कर रही, लेकिन इसका एक किस्सा मैं बताना चाहती हूँ कि हम जब एक दिन शेगांव दर्शन को हम जाते हैं,
तो हम ऐसे 2-4 साल पहले गए थे, हमारे साथ कोई मेहमान थे, तो वो बोले कि हमारे मामा यहाँ रहते हैं शेरगांव में, जरा तबीयत उनकी अच्छी नहीं, तो थोड़ा अपन 2 मिनट उनको मिलने जाएंगे। तो हम उनके घर मिलने गए, गर्मी का छुट्टियों के दिन गए थे। तो प्रॉब्लम ऐसी हुई कि हम बैठे तो बहुत देर बैठे, उन्होंने उनके मामा से बात की जो बेड रिडन थे, तो थोड़ा सा बात हुई। 5-10 मिनट हो गए हम बैठे, कोई हमको पानी नहीं पूछ रहा था। इज अ वेरी अमेजिंग थिंग कि व्हाई दे कैन नॉट गिव द ड्रिंकिंग वाटर। हम तो घर में आते तो पहले हम पानी तो पहले पूछते हैं, बाकी का नाश्ते पानी का तो बात अलग है। लेकिन हमने फिर बोला हमने कि हमको पानी चाहिए, गर्मी के दिन है थोड़ा। तो जो मातारी थी घर में, वो हमको ऐसे थोड़े से आंखें ऐसे करके देख रही थी कि पानी क्यों मांग रहे पीने का। और इतनी गर्मी थी कि इतनी प्यास लगी थी, तो पहले उन्होंने आधा ग्लास पानी लाया और फिर हमने मांगा कि हमको, तो उसका चेहरा देखने लायक था। फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा, हम उठ के अंदर गए, उनके किचन में गए, तो मैंने कहा आजी पानी चाहिए था पीने में, आपने लाया नहीं। तो बोले 8 दिन में एक बार पानी आता है, और हम 8 दिन में कटोरी से सिर्फ चम्मच नहीं भरते, लेकिन जितने भी बर्तन है घर में, हम ऐसा छोटा छोटा, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है, बहुत सारे मेंबर है, तो बहुत पानी लगता है। तो ऐसे में वो लोग बर्तन धोते हैं, तो वो घमेले में पानी रखते हैं, उसका यूज वो टॉयलेट में यूज करते हैं। सब्जी फ्रूट्स का जो दाल चावल का पानी होता है वो भी वो रखते हैं। थोड़े 2 पेड़ हमने लगा के रखे, बोलते सर्वाइव होना चाहिए, उसको हम देते हैं। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने वो खुद देखा है कि अब हमारे यहाँ डेली पानी आता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसे भी शहर है, गांव में तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन शहर में भी ये थिंग मैंने ये एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैंने वो शेयर करना चाहे। तो नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रेशर वॉल लगाना चाहिए नल को। ए वाटर प्रेशर reducing the wall basically control the amount of pressure in a hydraulic cycle. It is very efficient solution of water conservation in industries, residential, commercial and institutional building. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, मेरे घर में भी छोटे नात नाती है जो स्टूल पे खड़े रहते हैं और ब्रश करते रहते हैं, नल चालू रहता है। तो देखो, अगर वो प्रेशर टैप का जो वॉल है वो हमने ऑलरेडी बेसिन का कम ही कर दिया, जो शावर लेते हैं उसका भी हमने कम ही कर दिया, तो प्रेशर ऑफ वाटर थोड़ा कम होते जाएगा, और उस पे भी हम कंजर्व कर सकते हैं। पानी का जो यूज है उसके लिए कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। और छोटे बच्चे, उनको समझता नहीं, हम 100 बार भी बोलते हैं लेकिन उनको समझता नहीं। बहुत बड़ा फोर्स से पानी आता है, उसके अंदर वो छोटे छोटे हाथों से अपना मुंह धोते हैं, दांत धोते हैं, लेकिन वेस्टेज ऑफ वाटर तो लॉट ऑफ होता है। पानी उनके हाथ में थोड़ा आता है, लेकिन वेस्टेज ऑफ वाटर इज द वेरी लॉट। तो ये भी हम कंजर्व करने के लिए एक मेथड है, हम उसका भी यूज कर सकते हैं। वाटर लिटरेसी, actually this is the is not a remedy of water conservation they give by in this the method I am introducing by water literacy. वाटर की शिक्षा, and वाटर की शिक्षा मीनिंग क्या, तो टोटली दिस इज द रिलेटेड टू द वाटर शेड। ये थिंग वाटर लिटरेसी उसी में से आती है। वाटर शेड डेवलपमेंट कंसेप्ट जो हमारे गवर्नमेंट में आई थी, तो उसमें ये वाटर लिटरेसी चाहिए कि वाटर लिटरेसी में मीन्स द culminations of water related knowledge. People have to need the appropriate knowledge and understanding of their watershed, the natural, social and cultural conditions, as well as policy and regulations, economic trends and the development opportunity. इन सबको वाटर लिटरेसी एंड वाटर एजुकेशन चाहिए कि कितना पानी हमें नीड है, कितना हम यूज कर सकते हैं, कितना यूजेबल वाटर अपने पास है, कितना मीठा है, कितना ग्रे वाटर है, हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ये हमको वाटर लिटरेसी का नॉलेज दे सकता है। वाटर लिटरेसी विल हेल्प द अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स साइकिल। ये अपने को बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं वाटर यूज में, वाटर कंजर्वेशन में। एंड वाटर लिटरेसी विल एजुकेट the create the awareness of use of water, and it's one of the tool
that is much required for water sustainability, especially in the watershed program. इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो वाटर लिटरेसी थिंग है, ये अपने वाटर कंजर्वेशन की जो मेथड है उसमें नहीं आती, ये रिलेटेड टू द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। लेकिन मुझे तो ऐसा कहना है कि ये वाटर लिटरेसी हर एक को, छोटे बच्चे से लेके जो इलिटरेट पर्सन है उसको भी होनी चाहिए कि उन्होंने यूज ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन में बिलोंग होना चाहिए। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, importance of water conservation in India. In India, the rainfall is highly seasonal. जो पानी होता है इंडिया में वो सीजनल वाइज गिरता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन over the country. For example, in the western Rajasthan, near about the 100 and 150 millimeter paus fall down by the western side of Rajasthan, and in Meghalaya more than 1200 millimeter paus fall down, particular the northeast region of India. Is the very differentiation. कहाँ पे पानी बहुत कम है और कहाँ पे बहुत lot of water is fall down by the particular places. In India, the rain that fall on the land, mountain and forest. Some rainwater evaporate in the back in the atmosphere. Some percolate in the ground and some in the forest. The remaining flow into the rivers. अब रिवर्स की जो बात आती है, जो रेनफॉल होता है वो जब पहाड़ों में गिरता है तो फर्स्टली वो छोटे छोटे फिंगर स्ट्रीम्स होते हैं, नालाज होते हैं, फिर वो ट्रिब्यूटरीज होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, उसका पूरा नेटवर्किंग द फ्लो एंड मिड जो वाटर है वो फॉल इनटू द मेन रिवर, and main river in goes to the all of lot water into the sea or ocean. Therefore, all of running water goes into the sea. यानी मैक्सिमम जो रेनफॉल का पानी है वो मीठा पानी होता है और वो फ्लो से रिवर में भी चला जाता है। इसके लिए कंसेप्ट आई थी वाटरशेड डेवलपमेंट। एंड वाटरशेड डेवलपमेंट कंसेप्ट में यही है कि जहां जहां छोटे फिंगर स्ट्रीम्स बोलते हैं छोटे, बिकॉज माय PhD in watershed development, therefore this is the very different part of my lecture. I cannot be told, उस पे कोई मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन इन द छोटे छोटे स्ट्रीम कहाँ पे मिलते हैं, वहां उनकी जो श्रेणियां है उनको कैलकुलेट करके, वहां कंटूरिंग करके, वहां अपन वाटरशेड प्लानिंग कर सकते हैं। और वो जो सी में जो वाटर जा रहा है उसको हम वहां पे डैम है, छोटे डैम है, उससे हम वहां ब्लॉक कर सकते हैं एंड अपन वो रिजर्वायर जो है वहां पे अपन फुलफिल कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कि द रिमेनिंग फ्लो इनटू द रिवर्स, तो उसमें पहले अपने यहाँ पे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आया है, वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है, तो इसी का परिणाम है कि वहां पे जाना नहीं चाहिए। लेकिन सम बात जो प्रोजेक्ट आते हैं तो सम इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं उसको थोड़ा सा अपोज करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा, फॉरेस्ट चला जाएगा, समथिंग। तो ये अपनी बात नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट पार्ट है। लेकिन ये भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, अपन उसमें से भी वाटर कंजर्व कर सकते हैं। इन इंडिया 4% ऑफ वर्ल्ड वाटर रिसोर्स है। पूरी इंडिया में जो भी वर्ल्ड का वाटर है उसमें 4% वाटर इज अवेलेबल इन इंडिया एंड 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखो थोड़ा सा different picture है। maximum population in India in the whole world and 4% of availability of sweet water जो हम यूज करना चाहते हैं वो only 4% है। इसीलिए डिमांड्स ऑफ वाटर एंड क्राइसिस ऑफ वाटर ये बढ़ जा रहा है। most of the people face the water scarcity. Water requirement is the irrigation, water protects the ecosystems and wildlife. Next. The independence, the population of country has increased and growth is to the continue as well as increase to rapid urbanization, industrialization and increasing the economy of country. ये सब बातें हम करेंगे, डेवलपमेंट तो करना है, ये बातें हम सब करेंगे, इसके लिए पानी की सभी जगह जरूरत होती है। If they want to water, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा उसके लिए वाटर भी ये होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, सबको नीड होगी, तो इसलिए
जो भी यूज है एंड कंजर्वेशन, वी लिटरेट द कंजर्वेशन, अपन ने उसकी जो शिक्षा लेनी चाहिए और उसका रिक्वायरमेंट हमने करना चाहिए. Therefore, so many trace water demand and water supply. In urban areas, requirement of water is very high than availability water. पानी शहरों में ज्यादा नहीं है, जो रीजन है, बड़े शहर है, वहां अवेलेबिलिटी वाटर जो है, ग्राउंड वाटर, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है, रिवर्स का जो पानी है उतना नहीं, लेकिन डिमांड ऑफ वाटर इज लॉट ऑफ मोर डिमांड उनकी होती है, इसीलिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि उनकी डिमांड कंप्लीट करने के लिए. मोर एवर कंजर्विंग द वाटर इज ऑल्सो सेव एनर्जी, दैट इज बाय यूजिंग स्मार्ट अप्लायंसेस which are the water and energy efficient, we can reduce the water use and save energy too. Next, water conservation programs in India. The Ministry of Indian government launches the Jal Shakti Abhiyan, catch the rain, means the rainwater harvesting, related by this concept, in 2019. As a Jal Shakti Andolan encourage, it is a nationwide water conservation campaigning that aim is encouraging citizen participating to promote water conservation and a grassroots level. ये थोड़ा ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से होना नहीं चाहिए, जो भी कंजर्वेशन है, इसलिए वो प्रोजेक्ट लाए हैं कि ऊपर ऊपर में नहीं, ग्रास रूट लेवल पे तुम उसके रूट में जाइए, वहां से अपन कैसा कंजर्वेशन कर सकते, इसीलिए जल शक्ति अभियान गवर्नमेंट चला रही है, उसके अंडर वाटर कंजर्वेशन कर रही है. दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्चेड इन 2 phases, one in the 1st July to 30 September 2019 and the second is 1 October to 30 November 2019. इसमें 2 phases में 2019 में ये चलाया गया है कि इस अभियान में कैच द रेन, जो भी पानी गिरता है तो उसको अपन ने कैच करना चाहिए, सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. In 22 March 2021, in the World Water Day, the government launching in 2021 under the Jal Shakti Abhiyan, the theme of catch the rain, where it fall, when it fall. This is the theme is very amazing. The catch the rain last year जो था theme वर्ल्ड वाटर डे का, जो 2000 मार्च में हमने पहले भी उसके पहले बात की है, तो उसका थीम बहुत अच्छा था, कैच द रेन, वेयर इज फॉल एंड व्हेन इट फॉल. जहां भी गिरता है, जैसे भी गिरता है, कैच, वो पानी का पर ड्रॉप तुम कैच करो, उसको सेव करो. ये ओनली नॉट अर्बन एरियाज, इन ऑल ओवर इंडिया इज द rural and urban, all these are related by this the theme, means every water drop to save. It cover rural and urban areas and all of districts of India. This is the launching this the project, and they want to the catch the per drop of rain is the save, to conserve. And in 2002 theme is groundwater making invisible visible. जो ग्राउंड वाटर है, जो हमको दिखता नहीं, जो अंदर रहता है, उसको विजुलाइज करे. विजुलाइज की कंसेप्ट ये नहीं कि तुम ऊपर निकालो और उसका यूज करते जाओ, इसकी कंसेप्ट बिल्कुल ये नहीं है. उसकी कंसेप्ट ऐसी है कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द विजुअल एंड इनविजिबल एंड विजिबल. जो दिख नहीं रहा है, वो स्रोत जो है उसको विजुलाइज करो, उसका प्रॉपर यूज करो, और प्रॉपर यूज करके टू सेव करो, टू कंजर्व करो. ये इस साल की अपनी थीम है 2022 की. तो हमने भी उस सबको थीम को रिलेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट, रेन वाटर कलेक्ट इन द 4-5 months इन द मानसून. इन इंडिया अपन देखते हैं कि मानसून में ही रेनफॉल होता है. इज ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. So the scheme aim to the mandate all the stakeholders to be rainwater harvesting infrastructure according to the climate condition and to ensure the proper stages of rainwater. Under the Ministry of Jal Shakti Abhiyan has launched Jal Jeevan Mission. Under this mission, motto was हर घर जल, हर घर जल, हर गांव जल, और हर बूंद में भी
जल होना, गांव को जल मिलना चाहिए। ये उसका जल जीवन मिशन में है कि हर घर जल, जो भी स्कार्सिटी में आते हैं, जो गांव है, जो शहर है, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज ऑल्सो, बट गवर्नमेंट मिशन ऐसा है कि हर घर जल होना चाहिए। ही वॉज लॉन्चिंग इन द 15 August 2019. The mission aim is ensure accessibility of the pipe was in every rural household in the country by 2044. In the Jal Jeevan mission, the completed the Andaman and Nicobar Island. देखो ये जो 2019 में जो जल जीवन मिशन आया है, उसको completed किया है अंडमान निकोबार आइलैंड, गोवा and Telangana have achieved that 100% target, providing functional tap water connected to every household. उन्होंने घर घर में वो टैप दिए हैं। हर घर जल की जो कंसेप्ट है जल जीवन मिशन की, ये 3 जो अपने स्टेट्स है उन्होंने वो कंप्लीट किया है, अंडमान निकोबार, गोवा एंड तेलंगाना. दिस इज द, आई थिंक, very good thing they completed this mission, because this state is also थोड़े छोटे है, पर बिग जो स्टेट है उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल. कोई बात ही नहीं होती है इम्पॉसिबल की. ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, बट दे विल वी ट्राई इट. अपन जब तक वो करेंगे नहीं तो वो इम्पॉसिबल ही रहेंगी, पॉसिबल होगी नहीं. तो सबका कहना है कि वो होनी चाहिए. तो next, the built-up reselling system that ensure water availability even in the most vulnerable regions or provide the long-term of solution for sustainable use of water in the country. On the 23 March 2021, Prime Minister and his cabinet approved a memorandum of River Minister of the Corporation, MOC. ये नाम हमने सुना है, MOC. MOC ने ऐसा कहा, MOC ने ऐसा कहा. तो Minister of Water Resources. Between the Minister of Water Resources, River Development of Ganga Rejuvenations and the Ministry of Jal Shakti of India, Water and Disaster Management Bureau and the Ministry of Land, Infrastructure, Transport, Tourism of Japan for collaboration. This is in mission में हमको जापान कोलैबोरेट कर रहा है in the field of water resources and delta management. इसमें भी जो हमारा डेल्टा रीजन है उसमें भी जो पानी वगैरह का मैनेजमेंट करने के लिए हमको कोलैबोरेट कर रहा है कंट्री ऑफ जापान. This MOC, the aim of development, sorry. Long-term collaboration field of water delta management and water technology to increase exchange the information, knowledge, technology, and scientific experience. The participation is help of enhance the water security, improve the water demand. Next is it is the last thing, our responsibility. I told water uses, water conservation, and the sustainable approaches. These are the sustainable approaches. These are the projects hai, missions hai, all these are the sustainable approaches. Our responsibility, the need for water is hug. हम जो प्यारे व्यक्ति होते हैं उसको हक करते हैं, तो गवर्नमेंट का कहना है कि वाटर को भी हक करो, उसका महत्व जानो, जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन अ होल लाइफ ऑफ ऑल पर्संस, ऑल ह्यूमन बीइंग, ऑल लाइफ जो है सर्वाइव करते हैं उनको. Our opportunity, do not use the drinking water for the washing, bathing, gardening, etc. Our opportunity, जो मीठा पानी होता है जो पीने के लिए यूज होता है, तो ड्रिंकिंग वाटर फॉर वॉशिंग, बाथिंग एंड गार्डन नॉट यूज, ये करना नहीं चाहिए. जो भी खारा पानी आता है उससे हम यूज करेंगे. टर्न ऑफ द टैप व्हाइल द ब्रशिंग योर टीथ. हमने इससे भी बात पहले की है कि जो टैप है वो टर्न करना चाहिए. एक्चुअली उसका जो प्रेशर वॉल है वो भी कम करना चाहिए. ओनली द टर्न ऑफ वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर व्हेन यू हैव ए फुल लोड.
दो कपड़े हैं, चलो धोने वॉशिंग मशीन में, दो बर्तन है, चलो डिश वॉशर में डाल दिए, नहीं हमको कंटाला आ गया, हम नहीं कर सकते, दो ही बर्तन है, लगा दिए मशीन। पानी दो बर्तन धोने के लिए है भी उतना लगता है, दो कपड़े धोने में भी वॉशिंग मशीन को उतना ही लगता है। इसलिए कहना है कि फुल्ली लोड करो, जो भी वॉशिंग मशीन है उसमें कपड़े फुल्ली लोड करो, जो दिया रहता है उसमें उतनी ही डाल दीजिए जो उसकी कैपेसिटी होती है। एंड एज वेल एज डिश वॉशर भी होता है, बड़े शहरों में बड़े घरों में ये बातें होती है, तो इसीलिए वो फुल लोडेड जब तक नहीं होते, दो बर्तन के लिए दो कपड़े के लिए इस मशीन का यूज थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। यूज ए लो शावर हेड, क्लोज टैप प्रॉपरली। अपन शावर से नहाते हैं तो उसका प्रेशर हमने पहले ही बोला, थोड़ा सा प्रेशर जो वॉल है वो कम करना चाहिए। एंड जब भी हम नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, काम करते हैं, गार्डनिंग को जब भी पानी देते हैं, तो टॉप हम जो टैप है हमारा वो प्रॉपरली बंद किया कि नहीं, उसमें कोई लीकेज होगा तो फौरन वो लीकेज भी हमने रिपेयर करना चाहिए। कि वन बूंद दिन में 24 आवर्स में अगर वन बूंद पानी टपक टपक गिरता जाएगा तो लॉट ऑफ लीटर वाटर इज द वेस्टेज, ये पानी वेस्ट हो जाता है, इस पे भी हमने ध्यान देना चाहिए। इन अदर्स वर्ड, वाटर कंजर्वेशन इज नॉट अ जॉब that is responsibility for scientists, hydrologists, forester, city planner, and building constructor, etc. It is our job as well as our means पर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इनकी जॉब है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हाइड्रोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, जो फॉरेस्टर है, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स है, जो प्लानर्स है, तो इनका जॉब है वो वाटर यूज का देखेंगे, हम कितना हम करते जाएंगे, वो कंजर्वेशन उनका काम है, वही करते जाएंगे। अवर जॉब नहीं है, और एज वेल एज अवर मीन्स अवर जॉब भी नहीं है। बट I told you, all the government, all these are all these are given the person responsibility, because water conservation is everywhere our responsibility. Save water, all our duty is to save water and properly use of water, and conserve the water and save per rainfall dropping on the land is thanking sir, thank you. Sir, 1 minute only. I am very thankful to Sri Shivaji College Arts, Commerce and Science, Rajura, and I am very thankful to your principal, Mr. Markat sir, and I am very thankful to Vasake sir, my colleague. I am very thankful to all your staff of the college. They give me this opportunity. I present this the keynote address of your webinar. You organize it. I am very thankful. Again, I am thankful to you. Okay, sir. Namaste. Okay, namaste. हेलो सावड़े मैडम, हेलो मैडम, हेलो हेलो साबड़े मैडम, हेलो हेलो त्या नसतील सर, त्यांचं इंटरनेट होऊ शकते कट झालं असेल.
हेलो हेलो। हाँ, थैंक यू मैडम, क्यों देशमुख मैडम। आज के इस वेबिनार में आपने बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया है, इसलिए मैं आपका और हमारे कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद Thank you, देशमुख sir. मैडम। Thank you very much. Give me हेलो। opportunity. Thank you very much, sir. Thank ओके you. मैडम। Okay. अगले नहीं, अगले स्पीकर है, उनका इंट्रोडक्शन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर वनिता वंजारी मैडम, जो नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन है कावेरी दाभाडकर यांचं इनका इंट्रोडक्शन हेलो करके देंगी। हेलो हेलो। हाँ वंजारी मैडम। हाँ, एक मिनट। हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्राध्यापिका डॉक्टर वनिता वंजारी, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं सेमिनार के स्पीकर डॉक्टर कावेरी दाभेलकर मैडम का परिचय देने जा रही हूँ। डॉक्टर दाभेलकर मैडम डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर यहाँ कार्यरत है। मैडम 31 सालों से अध्यापन कार्य से जुड़ी है। मैडम ने 154 सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। मैडम के 8 बुक पब्लिश हुए हैं। मैडम के 8 स्टूडेंट को पीएचडी प्राप्त हुई है। इसके अलावा मैडम उत्तर प्रदेश मेंबर है। इसके अलावा एसोसिएशन से भी जुड़े, विवेकानंद के कन्याकुमारी बिलासपुर चैप्टर की एग्जीक्यूटिव मेंबर है। मातृ सेवा संघ की बिलासपुर ब्रांच की भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है। साथ ही मैडम को अवार्ड प्राप्त हुए हैं। 1984 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का एमए भूगोल का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1988 में रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर की छत्तीसगढ़ शोध छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। 1995 में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2003 में गुरु घासीदास साहित्य परिषद रायपुर का अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। 2013 में डेक्कन जियोग्राफिकल सोसाइटी पुणे का जियोग्राफी टीचर्स अवार्ड प्राप्त हुआ। 2018 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी का एक्सेलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैडम आकाशवाणी से जुड़ी है। इस प्रकार आज के हमारे रिसोर्स पर्सन हमें आज के विषय पर मार्गदर्शन करेगी। धन्यवाद। हाँ सर, कावेरी मैडम। हेलो। हेलो। हाँ दाभाडकर मैडम। हेलो। हाँ हाँ येत आहे। येत आहे मॅडम। हेलो।
हेलो, हाँ दावड़कर मैडम, म्यूट है आप। हेलो मैडम। हेलो, हेलो। हाँ मैडम। हेलो, मॅडम आवाज नाही येत आहे तुमचा. हॅलो मॅडम. एक मिनिट मॅडम, मी फोन लावतो. ओके. अभी आता येतोय का? या मॅडम हो आता येतोय. हो, आता येतोय मॅडम. ओके ओके. चला. Now, let's, I just give the presentation. Respected Dr. S.M. Varkadse, Principal, Shri Shivaji College, Rajura. Convener, Dr. M. Vasake, Head of the Department, Geography, Shivaji College, Rajura. And respected keynote speaker, Dr. Rajani Deshmukh, Madam. And of course, all the staff members of the college and my dear audience. First of all, I must congratulate to all of you to organize this one-day workshop on such a relevant topic, water and water use. As Dr. Rajni Madam mentioned it, it is a precious resources of the world. And it is stated that if the world war is happened, the responsible factor is only water. So there is a great need to sustain the water resources in all manner. As far as the water is concerned, slide show next. As far as the atmosphere, our hydrosphere is concerned, we already know that 90%, 89% of the earth is surrounded by water. The water available to planet Earth is the same water that has always been available and the only water that ever will be available. Because water covers 3/4 of the Earth's surface, it might appear that there is a plenty to go around. And reality, what is that? However, we have very limited amount of fresh water. Very limited amount of fresh water. Over 97% of the Earth's surface is found covered by ocean water, which is saline. About 2% of the water is stored in glacier and ice caps and snowy mountain range. And thus only 1% of water we have for our uses. As this diagram shows, where the water we receive and where the water has gone. As you know, this diagram, we have water, 79% water in the form of ice caps and glacier, that is fresh water, of course. But accessibility of fresh water is only 1%, of which 2%, 20% is groundwater. And then accessible surface fresh water is stored in 52% in lakes, 1% in rivers. Soil contents as soil moisture 38%, and of course the 8% of water gone through the atmosphere by vaporization process, and 19% uses by living organism. And what is the stage? What is the structure of the uses of the mankind? That is 55% of total water we received is used for agriculture, and 1% uses for institutional purpose, and industries and other factories are uses 22% of the water, total received water, and 4% of water we commercially used, and gardening and parks and national parks are uses 2% of water, whereas residential use means drinking water purpose we use only 31% water. And average residential use are very small amount, and we can say that we can save
back कसं जायचं? As far as the water is concerned, India's water is concerned, India accounts for 2.45% of the total world's surface area, and 4% of the world's water resources, and about 16% of the world's population we have. And we have only 4% of total water available as far as the world is concerned. In our country, total water available in the form of precipitation is 4,000 cubic meter per cubic kilometer. The availability from the surface water and replenishable groundwater is 1,869 cubic kilometer. Out of this, only 60% can be put to beneficial uses. Thus, the total utilization water resources in the country is only 1,122 cubic kilometer. As far as the water per capita uses of India is concerned, we have uses 1,658 cubic billion liter per day for agriculture, and 115 liter per day for industrial purposes, and 93 cubic meter for domestic purposes. And as far as the world is concerned, they used 69% cubic meter for agriculture, 23 cubic meter in industry, and 8 cubic meter for domestic purposes. We know that whatever the amount we receive from in the form of precipitation, the 60% of water we use for agriculture or irrigation for agriculture purposes. That's we wastage 60% of water. India is only few countries in the world where the cities provide as much as 200 liters capita per day per water. It goes without saying the most of it is wasted, used in cleaning toilets, washing cars, maintaining gardens, and no wonder our field of cities constantly strive for water. Our state busy fighting over it. Karnataka battles Tamil Nadu, Maharashtra with Karnataka, Punjab has a sword against Haryana, and Madhya Pradesh is getting ready to battle with Uttar Pradesh and Gujarat. The fight have become so intense that today even Supreme Court is worried to pronounce firmly on the judicious distribution of water resources. It been drawn without any conflicts. This is the statement of Ramasamy Iyer. As far as the groundwater resources is concerned, in our India, we have total groundwater recharge is 433 billion cubic meter, of which annual groundwater draft is 231 billion cubic meter, and thus balanced dynamic groundwater we have available is 168 billion cubic meter. And water availability and use in India is concerned, we have 4,000 billion cubic meter, and available water resources, as I already said, that 1,869 million cubic meter, and utilizable water is available for us that 1,122, and surface water 609, and groundwater 432, and present utilization is 605 million cubic meter. Means we have used 63% of surface water and 37% of groundwater, of course. And as already I said, the water most of the water is used for irrigation purposes, that is 501 billion cubic meter, and for domestic purposes we have 30 billion cubic meter, and irrigation industrial purposes 74 billion. As far as the water use and agriculture is concerned, we already know that our Indian 54% of the Indian agriculture is dependent on rainfall, while 42% are under drought-prone areas, and we have we have 140 million hectare agricultural land, out of which
54 is still dependent on rainfall, and 42% are on drought-prone area. Then India received an average 4,000 billion cubic meter precipitation every year. Only 48% it is used in India's surface and groundwater bodies. Annual rainfall is annual rainfall is around 1,800 millimeter, of which 75% received in a very short span. That also that also create a question how to conserve this excess flowing water, and how to conserve the water which we received on very short term, July, August, September only. This is the story of the water uses in our India. You already say that we have more than 100 million people live in areas with poor water quality, and most of the India, you already see in this map that 50% of India are under water pressure. While we have already seen that the only northeastern part of the India and Kashmir and adjacent area now having sufficient water, and some part of the Chhattisgarh and some part of the Jharkhand and also receive sufficient amount of water, but rest of the India are in a water stress, extremely high stress. As for the India, as far as the India's water uses is concerned, industrial water use is concerned, in 1990 it was 34 million cubic meter. It means 6.6% of total water received, while it is increased by 2010, which 41.4 billion cubic meter, and then in 2025 it may be increased for 80 million cubic meter. It means we use 855% of the total water received, and by 2015 it goes around up. It will goes up about 143 million cubic meter. So in India, there is about 44.2% of the increase of increase in withdrawal of fresh water per year. It was 67 billion cubic meters in 99, and now it is 228 billion cubic meter, and by 2025 it means we require lots of water. Our demand is growing day by day, and how can we compensate? We don't know, but it is the one thing, it is clear that if we cannot save the water today, so the scenario will be bhayanak. According to CSC, on average, each liter of wastewater discharges further pollutants about 5 to 8 liters of water. Between 35 to 50% of the total water used in the country, and not the 7 to 8% that is considered as industrial wastewater use. The most of the industries are not uses wastewater. The wastewater treatment system by most of the industries are essential installed to meet the wastewater discharge norms, which are the concentration based. That is, they measure the concentration of pollution in a given quantity of water. The result is that an industry can meet the required standard merely by diluting the effluents with clean water. Since the cost of water is low, it makes more economic sense for an industry to dilute the effluent than to treat it to meet the standards. As far as the drinking water is concerned, around 58.3% of households still rely on hand pumps and tube wells, public taps, piped waters from neighbors and protected and unprotected wells, and private and public taps for their water.
as high as 48% of the rural household and 28% urban households have to survive without access and improved resources. These are the data we just derived from the UNICEF website. 11.3% household do not get sufficient drinking water from their primary sources throughout the year. Recently released NFHE 5 जो कि 2019-20 में published हुआ था, that data shows that while access to drinking water from improved sources has increased by in the 22 states survived as compared to NEFH 2015 to 20, rural areas still continue to lag behind to compare to urban areas in terms of access of drinking water. Yes, of course, many of the cities are facing the problem of water to fetching the drinking water purpose. As far as the water uses is concerned, we have lots of problem regarding the use. Some of due to unawareness of the uses of water, some of our traditions, some of our technologies we use, improper technology we use. I went to the field and find out the fact about the water uses in our state. Of course, I am from Chhattisgarh, so I just go to the field and find out the facts regarding the water uses in our area. So some of the observation as a sample study I just give you for an example. Many of the villages in our state like Borsaram, Sena, Chatona, Pali, I just go all around that village and we found that ponds water is used for nistari, but now groundwater used to potable purposes through tube well and hand pumps. And Kotwar and a village is responsible for the supply of water every day, evening and morning, with limited time. But what happened? The Kotwar opened the supply of water at 6 o'clock, and it is continue as where he closed. If this practice supplies heavy water loss every day in rural areas. In Chhattisgarh, most of the plain area has a shale and limestone strata. Crusher industries are common in the rural areas in the plain, like Mohotara village, Khaira village. I just visited that village and I found that the layers of small dust let down on agricultural field that leads the land to land quality poor, and problem of water logging arises. They dug the mine so that the water level of surrounded ponds goes down. Besides, due to small suspended particle presence in the air causes the water pollution also. These are the picture of this particular village where I visited for the study of water resources. The dug well of the village Mohotara is totally dried, and the area agricultural land is covered by crushers. Chhattisgarh government sanctioned the 34 power plants to Janjgiri district to generate, and 40,000 megawatt electricity may be produced. It requires 16 lakh cubic meter water per year, and huge quantity of water used by industries than how the need of water for other uses fulfilled. Today, Janjgiri Chapa is drained by the Hasdol, Ilagar and its tributary, and 80% of the land is irrigated. But after establishment of water power plant, there is a scarcity of water occurred. And Chhattisgarh Steel and Power Limited uses groundwater, 6 inches bore. Since last 3 years, it is observed nearby the villages of this region. And what is resulted? The bubble problem fetching the water from hand pump arises in nearby villages, and nearby villagers have a scarcity of water. As far as the administrative decisions are concerned, we just go through this also. Decision of government plays an important role in water utilization. There are many examples how government policy affect the land and water use. Most of the farmer uses groundwater for paddy in summer crops, and the regular required huge amount. As a result, scarcity water in the purpose of other purposes observed.
Second, the getting water for their field, they quarrel each other, and this ultimately become a serious social issues and sometimes turn into crime also. To avoid the problems of water use, government has circulated the order of restriction in summer period. These are the pictures of particular villages. We saw that due to crusher industries, the limestone are raised around on the layer of the nearby villages, and that's why the percolation capacity, porosity of the land decreases. That's why the groundwater level goes down. Second, that's impact is that the ponds of that particular village, Mohtara, is dry. In Chhattisgarh, life in a village is still governed by the ponds, and villagers uses pond water for their daily needs. Agriculture, and after independence, due to water resources development process, hand pumps are installed, canals let down, but tube well bores. But in the process, ponds are neglected, and the traditional way of water resources now goes behind. Water holding capacity of the ponds gradually decrease because the maintenance of the ponds, cutting of the trees on the bank sides, then siltation and improper management. Yes, of course, the cutting of the tree is the biggest reason for the water losses in overall the world. As far as the data is concerned, we have in our Bilaspur district, we have total water holding capacity in various ponds are let's see the data. And as far as the Mungel is concerned, we have 83,775 million cubic meter water holding capacity, but now it is decreased by 67,930. And other blogs also show the data which shows the decreasing water level in ponds also. As far as the groundwater in India is concerned, uses of groundwater in India is concerned, we know that the main Indian cities, states including Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and Tamil Nadu faces water shortage, exacerbated and change in rainfall pattern. In India, spent reported on June 6, 2018. We already know that in India, exploitable groundwater occurs in 44.34 million hectare, and utilization of groundwater is 30%, whereas 73% of groundwater is used for agriculture, irrigation purposes, and remaining water is used for industrial and domestic purposes. Some part of the country, Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab, have packaged groundwater which is unfit for domestic and irrigation purposes. The groundwater is India depleted by 10 to 25 millimeter per day between 2002 to 2016. And average rainfall declined from 1015 millimeter in Kharif summer cropping season of 1970 to less than 1,000 in Kharif 2015. Similarly, in the winter cropping and Rabi season, average rainfall declined from 150 millimeter in 1970 to 100 millimeter in 2015. Dry days also increasing. And thus, it is clearly shown that the groundwater level is depleted day by day. As far as the surface water is concerned, there are four major sources of surface water. There are river, lakes, ponds, and tanks. In the country, there are about 10,360 rivers and other tributaries longer than 16 kilometers each. The mean annual flow in all the river basin in India is estimated 1,869 million cubic meter. However, due to topographical and hydrological and other constant, only 690 million cubic water, means 32% of water which is available in India is used for use. Water flow in the river depends on the size of the catchment area and a river basin and rainfall within a catchment area.
We already know that nowadays much of the annual water flows in South Indian rivers like Godavari, Krishna, and Kaveri has been harnessed, but it is yet to be done in the Brahmaputra and Ganga basin. Government of India try to restructure a river basin to maintain the water resource conservation at all. As far as the demand and utilization is concerned, India has traditionally been an agrarian economy, and about 2/3 of its population have been dependent on agricultural. Hence, the development of irrigation to increase agricultural production have been assessed a very high priority in the 5-year plan, and multi-purpose river valley projects like Bhakra Nangal, Hirakund, Damodar, Nagarjun Sagar, Indira Gandhi Canal have been taken up. In fact, India's water demand at present is dominated by irrigation needs only. In areas having large population on receiving little rainfall, the groundwater supply may have to be recharged, and a country's water supply is determined by its precipitation. The earth as a whole receive plentiful of rain accessible few places. Of course, the water is precious resources we use for irrigation, we use it for drinking purpose, we use it for industrial purpose, but the per capita availability of water is dwindling day by day due to increase in population. The available water resources are also getting polluted with industrial, agriculture, and domestic effluents, and this in turn in further limiting the availability of usable water resources. That's why the quality of water, deterioration of quality of water is another problem. Water quality refers to purity of water and water without unwanted foreign substances. Water gets polluted by foreign matters such as microorganisms, chemicals, industries, and other ways. Such matters deteriorate the quality of water and render it unfit for human use. When the toxic substances enter lakes, streams, rivers, ocean, and other water bodies, this results in pollution of water, whereby the quality of water deteriorates, affecting aquatic system. And that's why we need the water conservation, water quality conservation, water management. Why conservation of water is essential? The issues of water conservation is not about saving the water, but it is about having enough clean water at given time, at given place to meet the required needs. Griffith Pinchot say the American conservation and politician refers conservation as the wise use of the water, earth, and its resources for lasting good of man. This is the conservation. And what are the methods of conservation? Some of the methods of conservation is mulching. Fog and dew contain substantial amount of water that can be used directly by adaptable species. Contour farming, tippy tap water of water conservation, propagation of dry garden and ecological lawns, soak pit construction, tree plantation, desalination, and long distance transfers of water. These are the water conservation. Of course, drip irrigation, rainwater harvesting, plant vegetation, rooftop harvesting, and zero net deforestation is another way of conservation of water. You already know what is the drip irrigation and rainwater harvesting. Madam Rajani already explained the rainwater harvesting system also. Zero net deforestation is the recent method of water conservation implemented in African countries due to lack of water. Zero net deforestation refers to no deforestation anywhere, including restoring the forest areas, because it also has chances to destroying the forest fields. Then soil management. If we manage the soil properly, then we can conserve the water also. Weather application skills is another important aspect to conserve the water, because as we know the disastrous way of rainfall, then we can prevent, then we can
protect ourselves from these disasters. And of course, we will be able to make a plan to conserve this abundant water suddenly we received in our region. Organic farming method is another point. We use lots of chemicals in our fields. They not only deploy the quality of food we eat, as well as the quality of land, which ultimately are responsible for the water percolation capacity. Then construction of dam is another simple method to store. Storage of water by construction of various water reservoir have been one of the oldest method of water conservation. The scope of storage varies from region to region depending on the water availability as well as the topography of that region. The environmental impact of such storage also need to be examined for development environmental friendly strategy. These are the example of water storage. It is the Kutaghat reservoir, which is situated 29 kilometers from the Bilaspur city. Conservation of rainwater is another important aspect, because rainwater has been conserved and used for agriculture in several parts of our country in ancient time, and it is the only source we received and we stored and we conserve as far as the water resources is concerned. Rainwater harvesting, as you already know, that it is also important to storage rainwater as far as to increase the groundwater level and reduce the surface runoff. Groundwater conservation is another part of conservation. It is important integral part of water conservation. And of course, we know that water is sprayed over the ground to increase the areas and length of the time for water to remain to contact in the soil, so as to allow maximum possible opportunity for water to enter the ground. Series of anicuts built on various rivers of Chhattisgarh have served the purpose of conservation and storage of excess surface water for future requirement, since these requirement often changes within the season and a period. Then percolation tank method also is helpful for groundwater recharge, artificial groundwater recharge. These are the anicuts of Lilagar River, which is situated near Bilaspur city. Sarwan Devri anicuts. This is Lilagar barrage. And this is the Kutaghat Dam again, which is constructed in 2930, and it covers 1,25,000 acres of land. And it not only gives the irrigation facility to nearby village, nearby areas, but it is also a beautiful tourist place, which produce 26 rupees worth of rupees 26 lakh rupees fish and other. Lohada anicuts Tesua River. These are these are the we can construct anicut to conserve the water. The reduce the water of loss, transmission losses of canals can be primarily prevented by canal lining. Canal lining is another important aspect to conserve the water resources, because canal lining project undertaken by the government of target to minimizing the transmission losses of water. The current irrigation capacity of the, for example, current irrigation capacity of the reservoir is 40,485 hectares, which is expected to rise to 48,800 hectares. But when it is available, when canal lining, by canal lining we prevent it. Because the canal, due to cavities, there are so many water loss observed. This the work is canal lining. This is the canal lining works, the reconstruction of the work. 80% of loss can be prevented by canal lining works. Now this is the work
completed and the canal is fulfilled. Similarly, see this. This is a Ghonga reservoir completed by Department of Irrigation, lining work of 100 kilometer. So, and thus by this efforts, 20% of surplus we have enhanced the irrigation capacity of the two reservoir, Ghonga and Kutaghat. So the reservoir construction is not only the way to conserve the water, but if we making the canal lining work is another source of water conservation. Then catchment area, catchment protection plan is another important to conserve the water resources. Catchment protection plan are usually called watershed protection and management plan. It helps in withholding runoff water by check birds constructed across the stream in hilly terrain to delay the runoff so that greater time is available for water to seep groundwater. This technique also helps in soil conservation also. Afforestation in catchment area is also adopted for water and soil conservation. See, this is the catchment area protection. This is also held in our region. Mulching is another aspect. The application of organic and inorganic materials such as debris, compost, slow down the surface runoff, improve the soil moisture, reduce water evaporation, and improve the soil fertility. Soil covered by the slow down runoff and minimize evaporation loss. Hence, the field should not left bare for a long period of time. Then plowing helps to move the soil around. As a consequence, it retains more water, thereby reducing evaporation. Then shelter belt of trees and bushes along the edges of agriculture field slow down the wind speed and thus reduce the evaporation and of course erosion, which is indirectly affect the availability of water of any region. Then planting of tree, grass, and bushes brings the force of rain, and that ultimately helps the water to penetrate in the soil. Contour farming is adopted in hilly areas and in lowland areas of the field base. See, this is the example of contour trenching in our near Akaltara block. See. And then not only contour trenching, then after contour trenching, they just planted there. Now, the situation of this area is look like. It means we can conserve the water percolation capacity, the storage capacity of soil, we can increase by trenching, contour trenching and plantation. The scheme of diverting water from region with the surplus water to water deficit region can be adopted. This is called water transport. It is proposed by, for example, in India level, Atal Bihari Vajpayee, when was the president, he started a Ganga Kaveri Yojana to conserve, to balance the water resources overall India. And now in our state, it is proposed to construct a dam at the Ahiran River to Korba district and divert water to the Kharang Reservoir through the feeder canals. This is the picture of this one. The river Ahiran, which is the river Ahiran, and this is the river Ahiran. Then it flows down and it is connected with the Kharang Dam, and through Kharang Dam canals goes down and it supplies to the city of Bilaspur. And it is a planning that 70 is MC, a million cubic meter water available for Bilaspur city, their palatable uses. Prevention of soil erosion by flush bar for erosion, soil erosion, to prevent the soil erosion, the flush bar can be made. It means we can conserve more and more water to vanished out. And the groundwater recharge, it is helpful to groundwater recharge. These are the some methods.
to conserve water. It is estimated that 10,000 hectares of land loses about 160 cubic meter of water each year. The water losses through evaporation from the storage tanks, reservoir, irrigation, rivers, and canals reduce the water available of various resources. The method that reduce evaporation from water bodies are installing wind breaks to reducing energy available for evaporation, construction artificial aquifers, minimizing reservoir regulation through minimizing reservoir regulation, which ultimately reduce the ratio of the area and volume of the water bodies locating reservoir at the higher altitude. And say these are some of the traditional methods of water conservation in India. Cool bamboo drip irrigation, zohards, zobos, khadin, iri, vidas, ahirpanis, kundam, surangam, and of course in your Maharashtra, this is Pani Panchayat in Maharashtra, hai na? Pani Panchayat in Maharashtra. These are some of the traditional methods of water conservation. As we already know that the jhalara are typically rectangular shaped step well that have three tiered step on 3 or 4 slides. These step wells collect the subterranean water seepage and upstream reservoirs or a lake. Jhalaras was built to ensure easy and regular supply of water for religious rites, royal ceremonies, and communities uses. The city of Jodhpur has 8 jhalaras, the oldest being the Mahamandir Jhalara, and dates back 660 AD. And Amir Khan's revolutionary action Pani Panchayat in Maharashtra and Ralegaon Siddhi model is one of the best model to conserve the water. And of course, as Rajni madam said that institutional conservation is not only way to conserve the water, ours is responsibility is one of the important step. Use only much water as we require. Close step well after use, especially brushing and other uses. Use washing machine that does not consume too much of water. Install shawm at the end of the day. If you have water left in your water bottle, do not throw it away. Pour it over some plant. Reuse water as much as possible. Change in attitude and habits of water conservation. Every drop count. And of course, awareness campaign for water conservation is another aspect. Pani ko bachaiye. Role of pupil participation is essential. Water conservation camps should be organized. College irrigation department and other NGOs और बहुत सारी एक्टिविटी हमारे यहाँ भी चली है. जैसे हम लोगों ने जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचन करिए जतन करिए, इस तरह के जल संरक्षण अभियान हमारे चलाना चाहिए. और जल के संबंध में ऐसे पम्पलेट जो है हम लोगों ने बांटे हैं हमारे कॉलेज के लड़कियों के माध्यम से. तो ऐसे हम इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी हम इस तरह के कार्य कर सकते हैं. और गवर्नमेंट की तरफ से भी कंजर्वेशन के जो बहुत सारे स्कीम्स है वो चलाए गए हैं. हमने पहले ही देखा था कि 2019 में जल अभियान कैच द रेन, 23 मार्च 2021 का MOC फॉर रिवर डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड डेल्टा मैनेजमेंट एज वेल एज रिसर्च कोलैबोरेशन इन द एज पर्सन. देन द गोल फॉर 22 मार्च 2021 Jal Shakti Abhiyan, catch the rain, if fall, where it fall, as the madam told is in detail, and 22 groundwater, making the invisible to visible. These are some of the plans, as you already know. Some other steps should be taken to conserve the water, that the irrigation project should be
planned, well planned, and different activities such as relief, rehabilitation of project affected population, micro level land uses planning, and capacity building of farmers should be initiated simultaneously. And of course, afforestation is one of the biggest thing to conserve the water. Wetland development as well as river banks should be promoted on priority to facilitate soil conservation, recharging of groundwater, and preventing flooding of rivers and siltation of water reservoirs. These are the benefits of plantation. So there is a need of plantation. It is necessary to follow the rules and regulation when an industry setup established in area. Traditional sources of water should be protected by introducing the old and new technology, combination of old and new technology, and village panchayat should be aware about the plantation along the bank of the ponds. Development of local capabilities by grooming new generation of water management technique and managerial power to implement various innovative projects with greater efficiency. Of course, the plans are made, but execution of plan is very important rather than making a plan. There is also a need for promoting multidisciplinary researches to strive the various aspects of water resources, conservation, efficient storage, reduction losses, and sustainable utilization. Public-private partnership, including civil society organization and stakeholders in water resources development and conservation. So for the state government were responsible for developing necessary infrastructure and managing water distribution, which lacked people's cooperation. Of course, if the government set up a new thing, then it is our responsibility to protect this scheme also. It is also necessary to organize small farms to enable them to get their share of water. As the poor are excluded from the most of the development program due to their ignorance and inability to make necessary investment. So, to provide to inculcate the water in social manner, government should plan such in a way that each and every person of the region, each and every people of the region get water in equally. Civil society organization as well as farmers organization can help the farmers in adopting modern technology and for establishing forward the backward linkages required for increasing their income. Convergence of various development programs can help increasing outputs, of course, and there are many development programs implemented by the Ministries of Water Resources Development, Agriculture, Rural Development, which coordinate by a single agency at the grassroots level to ensure effective utilization of the resources while creating better impact. Our country is not a water deficit region, but due to severe neglect and lack of monitoring water resources development projects, several regions in our country experience water stress from time to time. As we already know that this is a serious issue, and each and every one should take care about that. It is therefore necessary to prevent it by making best use of available technology and resources to conserve the existing water resources and efficient use of them for agriculture, industrial production, and human conservation. Imposing regulatory measures to prevent the misuse of water and introduction rewards and punishment to encourage judicious use of water will be helpful to conserve water. आपने शायद महाराष्ट्र मॉडल का वो पानी पंचायत वाला सुना होगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में से जो बेस्ट कंजर्वेशन करेगा उस गांव को इनाम मिलता है. तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है टू कंजर्व द वाटर. एक्चुअली वाटर कंजर्वेशन के जितने भी मुद्दे हैं वो सब कम्युनिटी से ही आते हैं. हम अपने हर एक बात के लिए
गवर्नमेंट पर डिपेंड होते हैं, करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बातों पर अड़िग रहे, हम अपने ही आसपास के पानी को कंजर्व करेंगे, तो शायद हमें यह स्थिति देखनी नहीं पड़ेगी। ये ऑफ कोर्स हमारी जो इंडिया की वाटर पॉलिसी है उसमें बहुत सारी बातों को इम्पोज किया गया है, जिसमें मल्टीपल इरिगेशन और मल्टीपल इरिगेशन प्रोजेक्ट टू कंजर्व द वाटर, इन ड्रिंकिंग वाटर कंपोनेंट को कम करने के लिए, then providing drinking water to all human beings, animals, and should be first priority. Then measures should be taken to limit and regulate exploitation of groundwater. Both surface and groundwater should be regular monitored for quality. Means our water policy has requires lots of preventive measures in that, but practically it is totally different from that. Most of the so it is our responsibility to conserve, conserve and save the water. Because awareness and orientation of all the water users to change the lifestyle to conserve the water and can help the country to tide over the water crisis near future also. So save the water and be a good citizen, but don't use water in this way. See, this is the use of water. एक नदी है, उस नदी में अनऑफिशियली एक हैंडपंप खोद दिया गया है, और हैंडपंप से भी पानी वो व्यक्ति पी रहा है, उसमें से कितना सारा पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमको अपना पानी का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने पानी के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे तो हमको पानी से हम रहनुमा हो जाएंगे। ऑफ कोर्स जो कहा था ना मैडम ने कि हमको हमारे पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली छोटी छोटी जल की बूंदों को बचाना है, जहां कहीं भी यह पड़े हमको इसे बचाना है। अगर हम इस तरह से यूज करेंगे तो हम कहाँ उस अभियान में सफल हो पाएंगे। निश्चित रूप से हमको अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपना काम करती है और हमें अपना काम करना होगा, तभी हम मिलकर कम्युनिटी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के जो सपने देख रही हैं सब लोग, और आने वाले संतति के लिए हम वाटर को कंजर्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रिंसिपल सर के प्रति, ऑर्गेनाइजर डॉक्टर वसाके सर के प्रति, और सब के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आपने जो विस्तार से बताया हम पानी का जतन, और ऐसा कहते हैं कि तीसरा महायुद्ध अगर होगा तो पानी के लिए होगा। इस परिस्थिति को आने से पहले पानी का सदुपयोग करना होगा। मैडम के मार्गदर्शन के ऊपर यही कहना चाहूंगी, करने में है जल का संचय। जल संरक्षण है हमारा सपना, ताकि खुशहाल ना। जल संरक्षण हमारा दायित्व ही नहीं, कर्तव्य है। इसके बिना सब जल देश में अभी हम अध्यक्षीय मनोगत के तरफ चलते हैं। हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर राजेश खैरानी सर, जो आज के अध्यक्ष है, मैं उनसे विनंती करती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय मनोगत करें। डॉक्टर राजेश खैरानी सर। धन्यवाद डॉक्टर सारिका मैडम। Really, it is my great pleasure to have and join with all of you on this very burning topics of the world, how we can combinedly save the waters on the earth. Today, I first of all, on behalf of my college and my organization, first of all, I welcomes and put my humble thanks to Dr. Rajni Deshmukh Madam, ex-HOD of PG Department of Geography, Bharatiya Mahavidyalaya Amravati. And also, I pray a very thanks by heart to Dr. Kaveri Dabhadkar Madam, Department of Geography, Government Bilasa, Girls PG College, Bilaspur. Really, Madam, दोनों talks
इतने इनोवेटिव एंड नीड ऑफ द टुडेज थे। एक वर्ड्स मैडम के टॉक में आया था, डॉक्टर रजनी देशमुख मैडम ने एक वर्ड बोला था कि वाटर इज द ड्राइवर ऑफ द नेचर, एंड रियली विदाउट वाटर वी कांट डू एनीथिंग। और इसको सेव करने के लिए ये एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जिस अमाउंट के अंदर वाटर का वेस्टेज बहुत ही बिना सोचे समझे एक अलगर्जीपना के साथ में जो वेस्टेज होता है, ये हम अपने घरों में भी देख लेते हैं कईयों बार। सो मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो बाथिंग, वॉशिंग, फ्रेशिंग अवर सेल्फ, इसके अंदर काफी वेस्ट हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों के बीच में जो अवेयरनेस होना चाहिए वाटर्स के बारे में, यानी जो रोल होना चाहिए एक्चुअल पब्लिक का या एक्चुअल ह्यूमन बीइंग का नेचर के तरफ, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसमें हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, और मैं ये मानता हूँ कि ये चीजें बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे याद है कि 1986 के अंदर व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन वल्लभ विद्यानगर गुजरात, एंड मैं एक हॉस्टल में रहता था, तो उस हॉस्टल के अंदर बिजली बचाने के साथ साथ में पानी बचाने के कईयों उपाय, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्टल में हम लोग रहते थे, तो जिस मालिक का वो हॉस्टल था उसको भी लगता था कि भाई वाटर और बिजली बचना चाहिए। उसमें उसका भी फायदा था आर्थिक रूप से, और एक जिम्मेदारी भी थी नेचर के प्रति। तो 1986 में हम लोगों ने देखे थे कि भाई वाटर्स का किस प्रकार यूज करना चाहिए। लेकिन 1986 से लेके आज 2022 तक मतलब स्थिति बदली नहीं है। आज भी हम उतने अवेयरनेस के साथ में पानी को बचाने की तरफ प्रति देखते नहीं हैं। तो ये एक जिम्मेदारी है हम सब लोगों की, एक पानी जरूर बचना चाहिए। डॉक्टर कावेरी दाभेड़कर मैडम ने तो पूरे छत्तीसगढ़ के वहाँ की जो वाटर कंजर्वेशन पॉसिबिलिटीज है और वाटर कंजर्वेशन के जो फिगर्स हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से मैडम ने बताए। बहुत सारे मैंने देखा हूँ कि बहुत सारे प्लांट भी ऐसे हैं कि जहाँ पे डोमेस्टिक्स में जो वाटर का वेस्ट होता है उससे कई गुना वेस्ट जो है कुछ कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में होता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आजकल एक अच्छा पानी पीना ये फैशन के साथ साथ में ये ह्यूमन के हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है, ये एक फैशन बन गया है। मतलब जैसे मेरी कॉलेज के अंदर यहाँ पे एक कुआं है मैडम, और इस कुएं का पानी हमने एक बार नोट किया था, तो उस कुएं में मतलब एक प्योर मिनरल वाटर से भी ज्यादा अच्छा वाटर हमारे कॉलेज के वेल का है 80। लेकिन हमारी आदत ये है कि हमें चाहिए मिनरल वाटर, मतलब प्लांट के द्वारा बनाया हुआ पानी चाहिए। तो मैंने मेरे एक मित्र का मिनरल वाटर प्लांट था, मैं वहाँ पे विजिट किया, तो उसने मुझे फिगर दिया मैडम कि भाई अगर 1 लीटर वाटर मुझे बनाना है वो पानी का, तो उसमें 1.65 लीटर्स वाटर को जब मैं प्रोसेसिंग करूंगा तब जाके मेरा 1 लीटर वाटर बनेगा। मतलब प्रति वाटर लीटर्स पे आप 400 ml या 500 ml या करीब करीब 600 ml वाटर वेस्ट करते हो। और हर मिनरल वाटर प्लांट वाला क्या करता है, ये जो वेस्ट वाटर है वो डायरेक्ट ड्रेनेज के थ्रू पे वो आउट कर देता है प्लांट के बाहर, मतलब उसका रिसाइकलिंग नहीं करता। और ऐसे मिनरल वाटर के जो प्लांट है जो हर स्टेट के अंदर हर गली कूचे में आपको वो जार वाले पानी दिखाई देंगे। इतना सारा वाटर वेस्ट होता है, और इनको परमिशन देने वाले कौन होते हैं? गवर्नमेंट देती है। BIS परमिशन देता है, फूड डिपार्टमेंट परमिशन देता है, लेकिन BIS और फूड डिपार्टमेंट ये रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाना चाहता कि भाई अगर आप मिनरल वाटर को यहाँ पे बना रहे हो तो कितना सारा वेस्ट है, उसको रिसाइकलिंग क्यों नहीं करते। मतलब इंडिया के अंदर होता यह है कि जैसे मैडम ने कहा कि मिसयूज और कंजर्व के लिए रिवार्ड होना चाहिए। मतलब अगर आप मिसयूज करते हैं तो आपके ऊपर फाइन होना चाहिए, और अगर आप वाटर को कंजर्व करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलना चाहिए। और ये सब नीतियां जो है गवर्नमेंट की वाटर पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन जो रूट लेवल से जो इम्प्लीमेंटेशन है ये नहीं हो पाता है। तो दोनों टॉक से मुझे तो इतना ही पता चलता है कि भाई ये सभी की एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग मिल के एक साथ हम लोगों ने पानी के बचाव के उपाय को करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा ये सुझाव ये है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी योजना को
प्रचलित करने के लिए, अपने योजना को आम आदमी की तरफ पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया उसके एडवर्टाइज के पीछे खर्च करते हैं। बड़े बड़े पेपर्स में एडवर्टाइज देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं। उसी प्रकार जितने भी सरकारी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हैं या प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं या जो कंपनियां हैं जिसके प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, वो हजारों करोड़ों अब्जों रुपए खर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सब लोगों ने कंपलसरी अपने बजट का, एडवर्टाइज बजट को कट करके एटलीस्ट 10 या 15% बजट अलग करना चाहिए। और जो एनर्जी कंजर्वेशन है और जो वाटर कंजर्वेशन है, ये उनकी ड्यूटी है। अपनी ऐड के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन की बारे में भी उन्होंने ऐड करना चाहिए। सो जहां तक सब मिलके एक साथ हम लोग इस चीज को बचाएंगे नहीं, अपने पानी को नहीं बचाएंगे, तो आने वाले दिनों में जैसा डॉक्टर सारिका मैडम ने कहा कि वाटर्स के लिए भी एक दिन युद्ध हो सकता है। वो दिन दूर नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि भाई हमारी तो जो पीढ़ी है या आज जिस स्टेज पे हम लोग हैं, तो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 साल और शायद हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ साथ में। लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी को जरूर हमें अगर कुछ विरासत दे के जाना है, तो उनको एनर्जी कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन के फायदे नहीं बल्कि उसकी हैबिट डाल के यहाँ से जाना होगा। और जब ये हैबिट डालेंगे हम एक संस्कार के रूप में हमारे घर से शुरुआत करेंगे और हमारी पीढ़ी को हैबिट डालेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो मोटो है और जो नीड है पूरे वर्ल्ड की वाटर के बारे में, ये जरूर पूरी होंगी। और पुनः एक बार मैं अपने महाविद्यालय की ओर से आज के दोनों वक्ता डॉक्टर रजनी देशमुख मैडम और दूसरी वक्ता डॉक्टर कावेरी दाभड़कर मैडम और हमारे पार्टिसिपेंट्स और डॉक्टर मेजर वसाके सर और प्रिंसिपल महाविद्यालय के डॉक्टर वारकर सर और सारिका मैडम और जितने पार्टिसिपेंट है, उनका पुनः एक बार मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छे टॉपिक्स को यहाँ पे आपने छेड़ा है। लेकिन इस टॉपिक्स को छेड़ने के साथ साथ में मैं पुनः एक बार डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, हमारी कॉलेज का डिपार्टमेंट और सारिका मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज के अंदर, मैडम ने बताया कि आप कॉलेज से भी शुरुआत कर सकते हो, कावेरी मैडम ने कोट किया था, तो उसी प्रकार आप जो वाटर्स को बचाने के जितने भी उपाय है, उसका स्लोगन के साथ साथ में आप पैम्पलेट कॉलेज की तरफ से बना के इस पैम्पलेट्स के अंदर जो सुझाव डॉक्टर रजनी मैडम और डॉक्टर कावेरी मैडम ने हमें दिए हैं वाटर कंजर्वेशन के बारे में, उस सुझाव का प्रसार प्रचार हमारे बच्चों के थ्रू ग्रामीण भाग में और रूरल एरिया में और हमारे अर्बन एरिया के अंदर ये होना चाहिए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेना चाहिए। तब जाकर आज का ये जो कार्यक्रम है उसकी सार्थकता होंगी, ऐसा मुझे लगता है। इन शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। ओवर टू डॉक्टर सारिका मैडम। धन्यवाद सर। बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य ही है कि हम पानी की बचत और पानी का अपव्यय कैसे कम करें। आपको प्रोजेक्ट अपने यहाँ पे चालू ही है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात पे मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम जब घर का प्लान करते हैं सर, तो नगर परिषद में वाटर हार्वेस्टिंग का अपन उसमें देते हैं कि हमने हमारे घर में वाटर हार्वेस्टिंग की है। अगर नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, उन्होंने वो सर्वे में देखना चाहिए कि आपके बहुत सा पानी की समस्या कम हो जाएगी। ये हमारा और का कर्तव्य है। और हम प्रदर्शन की तरफ मुड़ते हैं। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक नागनाथ मनूरे सर कि वो आभार प्रदर्शन व आगे का सूत्र संभाले। प्राध्यापक मनूरे सर। धन्यवाद मैडम।
आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्वांना माझा सस्नेह सादर नमस्कार. मी प्राध्यापक डॉक्टर नागनाथ मनोरे आज आपणासमोर आभार प्रदर्शनासाठी उपस्थित आहे. श्री शिवाजी महाविद्यालय राजुराच्या भूगोल विभागातर्फे आयोजित आजच्या या राष्ट्रीय सेमिनारचे अध्यक्ष स्वागताध्यक्ष महाविद्यालयाचे सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर SM वारकड सर यांचंही मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच आजच्या या सेमिनारचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आदरणीय डॉक्टर RR खिराणी सर यांनी अतिशय आपल्या ज्ञानवर्धक माहिती देऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. तसेच या सेमिनारची शोभा वाढवली याबद्दल मी त्यांचंही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच आजच्या या सेमिनारचे बीजभाषक कीनोट स्पीकर ज्यांनी आपल्या सुंदर अशा सादरीकरणातून या विषयावर यूज ऑफ वॉटर अँड वॉटर कन्झर्वेशन अ सस्टेनेबल अप्रोच या विषयावर ज्यांनी अतिशय सारगर्भित माहिती आमच्या विद्यार्थ्यांना दिली त्या माजी भूगोल विभाग प्रमुख डॉक्टर रजनी देशमुख मॅडम भारतीय महाविद्यालय अमरावती यांचंही मी या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करतो. तसेच आजच्या या सेमिनारच्या साधन व्यक्ती प्रमुख व्याख्यात्या थोर विदुषी डॉक्टर कावेरी दाभोळकर मॅडम शासकीय कन्या महाविद्यालय बिलासपूर यांनी आजच्या या अतिशय प्रासंगिक विषयावर अतिशय सखोलपणे आपल्या संगणकीय स्थिर सादरीकरणाने विद्यार्थ्यांना अतिशय सुंदर अशी माहिती दिली. त्यांच्या माहितीतून म्हणजे जलसंवर्धन हे काळाची किती गरज आहे हे त्यांनी प्रकट केलेलं आहे. त्यावरून एक सुभाषित आठवते की आमच्या हजारो वर्षापासून लोकसंस्कृतीमध्ये जलाला महत्व होतं. त्याच्यामुळं एका सुभाषितकारानं म्हणलेलं आहे की पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलम मन्नम सुभाषितम मुडे पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. याचा अर्थ असा की पृथ्वीवर फक्त 3च रत्न आहेत, ते म्हणजे जल, अन्न आणि पाणी. आणि ते लोक मूर्खच आहेत की जे धातूच्या तुकड्याला त्या ठिकाणी रत्न असे संबोधतात. अशाच प्रकारची माहिती मॅडमनी आपल्या या सादरीकरणातून दिली. जलसंवर्धनाचे वेगवेगळे उपाय त्यांनी सांगितलेले आहेत. नक्कीच हे उपाय जर आपण अंमलात आणले तर हे पाण्याचं दुर्भिक्ष, जलाचं दुर्भिक्ष आपण टाळू शकतो. मॅडमच्या या ज्ञानवर्धक मार्गदर्शनाबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीनं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. तसेच आजच्या या महत्वपूर्ण विषयावरील राष्ट्रीय सेमिनारचे संयोजक महाविद्यालयातील भूगोल विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रमोद वसाके सर यांचंही मी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी या अतिशय प्रासंगिक विषयावर हे सेमिनार या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे. तसेच आजच्या या सेमिनारचं सुंदर आणि खुमासदार संचलन करणाऱ्या ग्रंथालय विभाग प्रमुख डॉक्टर साबळे मॅडम यांचंही मी या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करतो. तसेच या राष्ट्रीय सेमिनारला देशभरातून विविध राज्यातून उपस्थित असलेले सर्व प्राध्यापक वृंद, संशोधक मित्र आणि विद्यार्थी मित्र या सर्वांचं मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. तसेच आपणा सर्वांना विनंती करतो अध्यक्षांच्या वतीने, तसेच या कार्यक्रमाची टेक्निकल धुरा सांभाळणारे देशमुख सर, राहुल देशमुख सर यांचेही मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांचेही मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमाची सांगता या ठिकाणी राष्ट्रगीताने होईल करिता मी आपणा सर्वांना विनंती करतो
की कृपया आपण ज्या ठिकाणी असाल त्या ठिकाणी जागेवरून या ठिकाणी राष्ट्रगीत गायचं आहे, म्हणायचं आहे. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ आशीष मांगे आए तव जय गाथा, जगन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। जय।